You are tuned into FM 92.6, educational radio by Mehran University, Jamshoro. Engineering with new perspectives. Stay tuned. Stay tuned. मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के अहदाफ में शामिल है कि अपने तलबा को अंडर ग्रेजुएट और डॉक्टरल लेवल पर जदीद तालीम के साथ जदीदियत के तकाज़ों से भी आरास्ता करे। इस सिलसिले में मेहरान यूनिवर्सिटी दरसगाहों, सनतों और हुकूमत के साथ बाहमी रब्त पैदा करके तलबा के लिए नए मौक़े तलाश कर रही है। आप सुन रहे हैं मेहरान यूनिवर्सिटी कैंपस रेडियो FM 92.6, तकनीकी तालीम जदीद तनाजुर में। And I'm a student of Bosch from US Picas W, and I extend a warm welcome. I consider it a true knowledge and privilege to be here on International Conference on Environmental Sustainability 2022, organized by Center for Advanced Studies in Water, Mehran University of Engineering and Technology. And I would like to express profound thanks to our partners, HANDS and Medico International, and collaborators, NASPAC, EcoSol, Tearfund, and Archroma for organizing this international conference. Save the green and blue before our generations has to paint everything black. So sustainability matters. International Conference on Environmental Sustainability is the premier forum for discussing environment, water, climate change, wastewater treatment, water resource management, geohazards, and solid waste recycling. It offers an arena for policymakers, government officials, and experts from various fields, professionals, researchers, and students to share their commendable work and provide the solution related to issues on common grounds. We look forward to get an exposure about the best of the brains think about this very dynamic issue of sustainability. We feel honored to have with us Honorable Chief Guest, Secretary Universities and Board Departments, Mr. Muhammad Murid Rahimu. I am profusely elated to take an opportunity to cordially welcome our worthy Vice Chancellor, Mehran University of Engineering and Technology, Professor Dr. Taha Hussain Ali. I extend a warm welcome to Professor Dr. Aslam Ukeli, former Vice Chancellor, Mehran University of Engineering and Technology, who proudly introduced the slogan, My University, who with his immense leadership and vision took Mehran University of Engineering and Technology to another level of success. We will remain grateful to your commendable efforts, sir. Thank you so much. I heartily welcome Director US Picas W, Professor Dr. Rasul Baksh Meher. I welcome Co-Director and Conference Convener, Professor Dr. Kamran Ahmad Ansari. I welcome Dean Faculty of Architecture and Civil Engineering, Mehran University of Engineering and Technology, Professor Dr. Khan Muhammad Barohi. I'm glad to welcome Chief Executive HANDS, Dr. Sheikh Ahmad Tanveer. Now, I would like to call Director US Picas W, Professor Dr. Rasul Baksh Meher for welcome address. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, Assalamu alaikum. Actually, I'm very much pleased to extend my welcome address in the first international conference we have organized in the US-Pakistan Center for Advanced Studies in Water on the theme of environmental sustainability. I want to little bit talk about the sustainability on the theme of the conference. Sustainability is simply everything that we need for our survival and well-being, either directly or indirectly from our environment. Sustainability creates and maintains the conditions under which human
and nature can exist in productive harmony that permit fulfilling the social, economic, and other requirements of present and future generations. Environmental sustainability involves the making right decisions and taking actions that are in the interest of protecting the nature world, with particular emphasis on preserving the capability of other requirements of present and future generations. Environment sustainability is about making responsible decisions that will reduce environmental impact, negative impact on the environment. It is not simply about reducing the amount of waste produced or using less energy, but it is concerned with the developing processes that will lead to businesses becoming completely sustainable in the future. Businesses can potentially cause damage to all areas of the environment. Some of the common environmental concerns: polluting water, resources, oceans, rivers, lakes, and pollution of the soil, agricultural land, polluting the environment through the burning of fossil fuels, damaging prime agriculture and cultivated land through the use of unsustainable farming practices, damaging rainforests and woodlands through logging, agriculture clearing and burning of biomass, that having a lot of impact. As well as industrial growth, it's good, but not on the cost of the environment. A lot of industries, they are emitting very hazardous flue gases and also discharging untreated effluents in water bodies, on the soil, and contaminating the groundwater and fresh water. For much of the past, most development businesses have acted with little regard or concerns for the negative impact they have on the environment. So, environment sustainability forces businesses to look beyond making short-term gains and look at the long-term impact they're having on the natural world. There's a need to consider not only the immediate impact of anthropogenic actions have on the environment, but the long-term implication as well. For example, manufacturing a product need to look at the environmental impact of the product, entire life cycle from development to disposal before finalizing your designs. Many large and small organizations are guilty of significantly polluting the environment and engaging in practices that are simply not sustainable. However, there are now increasing number of businesses that are committed to reducing their damaging impact, even working towards having a positive influence on the environmental sustainability. I'm pleased to share, because of this awareness, now many industries, they have installed ETP, effluent treatment plants, but still need more efforts to reach at the target. Environmental management can help and enable the companies to make efficient use of energy and material resources, as well as help them implement strict control on greenhouse gas emissions and other contaminations. Technological development basically is a very important solution, and there is a key of that is there is a need to do more, not only with technology, but key will be to nurture a culture that has a discipline, patience, and courage to look beyond short-term solutions and opt for a business practices that can offer greatest positive impact and longevity. The great challenge of the century is to raise people everywhere to a decent standards of living while preserving as much of the rest of the life as possible. So, ladies and gentlemen, conference basically is focusing on the environmental sustainability. And I'm also very much thankful organizers, our centers, faculty members, they have put a lot of efforts for the organizing this conference. And the last not least, I'm also very much thankful of Professor Dr. Taha Hussain on his leadership. We are organizing this conference. Sir, thank you very much. Thank you. Thank you very much, sir.
Now, I request our guest of honor, Professor Dr. Muhammad Aslam Ukeli, to please grace the conference with your valuable words. Bismillah ar-Rahman Rahim. Thank you very much, Dr. Rasul Bashmar, for inviting me in this conference. It's good to talk not as a Vice Chancellor, but as a guest. As always, environmental sustainability is a very important parameter. And I just start from this one very important sentence that Dr. Rasul Bashmar has given in his message. The greatest threat to our planet is the belief that someone else will save it. I think that's a message which we need to understand in the true spirit, that nobody else will come and save this planet. We have to save it. When we say we have to save it, then I'm sure that Dr. Kamran Ansari has in the end said that we need some deliberation, in the end some recommendation which we need to convert into the actionables. But I think now the time is very ripe that we should start doing something. It's not the time of talking. I mean, you can't improve the environment by sitting in the auditorium. I assure you, we cannot improve the environment by sitting in this auditorium. We need to be more responsible. We need to forget about publishing these abstract books. This is the wastage of the environment. I mean, we need to show our actions, our deeds in doing something. I mean, when we print this, you remember that how much we are losing the environment. This bottled water is another waste of the environmental sustainability. We talk about environmental sustainability, but we really need to do something. I mean, recently I heard Dr. Adil Najim, and he very rightly said that we can't improve the environment by talking in the auditoriums or in the drawing rooms. We need to do something. We need to do some actions. Now, what we can do actually, that's important. And that we start from our own self. I mean, our friend Dr. Bhavani is not taking showers. He's now using buckets for his bath because he feels that we have to save the water. I just give, every time I give a very small example of this water saving. In Pakistan, most of the time, the public bathroom, there's always a tipping of the drops. And being a student of mathematics, I thought that let's calculate how much water we are losing. And I remember that anybody who's here, who is good in mathematics, can easily find that we are losing gallons of water every day by just simple one drop of water, which is tipping from this tap. So we need to be conscious. We need to be actually doing something. And I mean, we being the Muslim, I always quote this Surah Rahman. All these blessings of Allah, they are blessing unless you do not abuse them. Sugar, so sweet. You love to have a sugar sweet every time. But when you can take excessive sugar, it becomes diabetic. So you should think this very water, because with water, again, another very important problem is that the availability of the fresh water is fixed. You cannot increase the availability of the fresh water. 3% water which is available in this world is the fresh water. But the population is increasing. I mean, the 3% water was available in 1947. We have 5,000 cubic per capita. Now it is less than 1,000 because the population is increased. It's a simple number. You have to divide it by that water. You get this per capita water availability. And that too, I mean, we are very unfortunate that one of the worst river in the world is the Ravi. I mean, I thought that Puleli is worse, but then I come to know in the newspaper that Ravi is worse than the Puleli. I mean, this very auditorium, Shah Usko has actually talked very boldly that, okay, you drink water, fine. But Dr. Sahab, aap wudu kaise karte hain? Kis pani se karte hain? How do you actually perform that wudu when you actually go for the namaz, prayer? You put that same water in your mouth for gargling. You don't get this mineral water for gargling. So you have to think. And already in this very auditorium, I think one of the study have identified 700 something points where this untreated water is being discharged into the river Indus. We talked this thing 3 years back, and yet, are you sure that those points have been actually taken care? No. We are keep polluting the things, and then we talk about the environmental sustainability. I think we need to sensitize. We need to actually put the things into the government that we need to sensitize this issue.
because by merely talking and by submitting, I remember I now realize that when I was submitting 96 my thesis, it was an energy modeling and energy recommendation for the Pakistan. And I remember at that time, my supervisor, the external who came for my Vivasi, has given a very wonderful remarks, and I still remember that remarks. He said, "Don't you think that book will be another book available in the libraries, but nobody will see it?" Yes, most of the time the conference recommendations are another fantastic recommendations available in the library, but nobody sees it. I think we need to convert our words into deeds, our words into action. That's the only way forward. Environmental sustainability is more important than ever. I mean, every time we realize hundreds of issues coming out of this environmental pollution. Water is the classical example. So is the air. Again, Lahore is the worst smog area in the world. So we are already, at least we are number one in certain bad things. So we need to think about it. We need to think rationally how to tackle these things. Water Center, as always, is always taking leads in bringing these wonderful issues, these important issues, in front of the people, in front of the academics, and they give you, because many times in the government they ask us that, what's your proposal? We say, we have already given you the proposal. You need to actually do something. You need to actually comply the recommendations. Here in this water center, and which is our brand center nowadays, is taken lead. I must congratulate Dr. Maher, Dr. Kamran Ansari, and all his team for arranging this wonderful, very thematic, very important conference. Everybody is talking about climate change nowadays, and obviously environmental sustainability is way forward for tackling the issues of climate change. I'm sure that other experts will talk more about it, but I, being a student of environment, I think now it's time for actions. Thank you very much, lovely. Thank you so much, sir, for such kind and wise words. I would like to call our worthy Vice Chancellor, Mehran University of Engineering and Technology, Professor Dr. Taha Hussain Ali, to share his thoughts on today's occasion. Bismillahirrahmanirrahim. All the students and all the participants of this conference, Assalamu alaikum. Indeed, it's a pleasure to be the part of this conference. And when I was trying to find out the words to start my speech, the comparer started with green and blue, my favorite colors. Though maybe I'm not wearing blue today, but blue is my favorite color. And then I looked at the banner and tried to make an understanding why green and why blue. So blue is for the sustainability and green is for the environment. And this morning when I was taking the class, I was teaching regarding the fresh and the green concrete to the students. So I told them the green concrete is no more the concept of a fresh concrete. Now the green construction and the green concrete is a concept of coming up with the different things with the environment friendly and the sustainability. So the green and blue is always part of the environment and the sustainability. They go hand to hand nowadays in our society, in our environment. And I'm really glad that the auditorium where we are sitting of US PICAS W, this is the real forum, this is the real one, this center is the one which can do a lot of environment and sustainability. Because when we say environmental sustainability, the different levels of environmental sustainability which comes in our mind are technical level, social and political level, economical level, and of course the environmental level. All these, they are considered as in your sustainable development for the environment. And looking at the papers, which this conference of the 2 days would be talking to, they are morely related to different themes, but the themes are more towards the technical and the social aspects. And I believe that this US PICAS has got the ability, the capability to come up with such conferences where the things can not only be implemented in terms of technical and the social, but also in terms of policies, in terms of something which could be generated from here, the ideas could be generated from here, which can be dealt at the upper level, at the strategic level, where
we should start now, as Dr. Kelly narrated, that we should start looking at as a style of life now, not only for the words, but this should become a style of our life, day-to-day life. And this is where we believe that Mehran University of Engineering and Technology, Jamshoro, should play a part, not among as just for the policy and for the conference purposes, but in the students also. The things should be coming up with an ideas, and they should also understand that in our day-to-day life, this environmental sustainability should be part of us. And I hope that the speakers would be coming up with something practicable, not in terms of only for the bookish and all that. There's some practical things where that can be implemented. And the implementation should start from Mehran University of Engineering and Technology, where we should feel if the things are being happening, it has to start from the Mehran University. Saving the water, saving the electricity, saving the environmental pollution, all these should be the vital aspects of not only for the conferences purposes, but ladies and gentlemen, even for our, as I said before, our day-to-day life. So I'm really thankful. I'm grateful to the department, to US PICAS Center to have this conference and called us for this conference. And I'm grateful to all my colleagues who are sitting here, the guests who have come, and hope to see you with some productive work which we can be implemented. Thank you very much. Thank you so much, sir, for such humble and sagacious words. Now, I would like to call Chief Executive Hands, Dr. Sheikh Tanveer Ahmed, to please adorn the stage with his remarks and word of thanks. Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Very respected Professor Dr. Taha. This is very important partnership of academia and practitioners. We as a practitioner, as Professor O'Kelly very rightly challenged, what have you been doing by holding this conference? So I'll be sharing at least hands work, what we have been doing to protect the environment and sustainability. Very respectable Professor Dr. Rasul Bakhsh Meher, I think this is your initiative that we two practitioners and academia are in the same auditorium under the same roof and working on the same cause. And there's one more organization, the delegate from Germany, Medico International, who really made us in this kind of the partnership since last 1 decade. Medico International reached to us in 2010 after the post-flood. And they are the one who gave us the initial money to really do the relief work. And since then, HANS is doing a lot of disaster response, relief and resilience work in the country. And Medico International since then, in last 1 decade, help us out in providing relief to Pakistani people in the when they are in pathetic state of flood or disaster. My very respected Professor Vaidi is HANS. As I said, we are trying to bring academia with the practitioners on the ground. So Professor Vaidi is now our rector of HANS Institute of Development Studies. So we'll take the experience of Professor Vaidi with his 30 years experience of Karachi University to develop another academic university. And a university is not only give the classroom teaching, but will also be telling what's really happening at the ground level. And the student of this Institute of Development Studies will also learn with the practitioner experiences in the ground. I think this topic and this conference is very important, and I'm privileged and honored that you have given me this chance and you have given hands to a chance to partnering this kind of the conference, which is very important and very important area to bridge the gap between academia and practitioner. What HANS has done or what HANS is doing
Alhamdulillah, Hands started 40 years ago with a very small organization. My founding member of the governing board, Ghulam Hussain Baloch, is sitting here. The organization is started by Professor Ghaffar Billu with a small seed of money in partnership with people like Ghulam Hussain Baloch. And then this has a phenomenal growth in last 40 years. In only last year, we did provide relief to nearly 6 million beneficiaries directly. 6 million means 60 lakhs people directly, which means what? Through the help of 2.5 billion rupees of grant, through the help of 33 district branches of the Hands, in the intervene area of 57 districts of the country, and through the help of the 10,505 working force of the organization. So a organization which has really demonstrable model of environmental sustainability on the ground, in addition to what we are doing in health, education, livelihood, infrastructure, water, sanitation, and other areas of social mobilization and disaster response. We are designing, we are engineering, and we are developing very cost-effective shelter, but with environmental aspect. We have given by now, in last 10 years, 88,000 shelter to 88,000 families, very poor families of the country, which is again is a mud and lime-based shelter. So it's saving a lot of carbon emission. Millions of tons of carbon emission were saved in last 10 years by promoting this kind of a shelter. ODF, or Open Defecation Free Village Declaration. We have done in last 3 years only 5,000 villages certified, declared by not only initiating mobilization, motivation, but also ensure the provision of the toilets and wetland. Wetland is another technology which can save the environment for the sanitation. And 5,000 villages were declared ODF free, open defecation free villages, which is again an action towards the environment and sustainability. Solarization, the alternate energy we are promoting. Thousands of health facilities, hundreds of schools, thousands of community houses are now had a provision, and they have given solar energy in addition to Hands office, which is not only head office, but also the district office. All are solarized, and that also, prevent the environment and carbon emission. So thousands of tons of carbon emission were prevented by providing these thousands of kilowatts of solar units in these areas. Plantation is another important area where Hands work a lot. I think in last 5 years, more than 5 million plants were planted and nurtured in our 16,000 villages across Pakistan. And that also one of the action of Hands for environmental sustainability. So this is the contribution of Hands, and of course, your partnership will make it more quality contribution. And we hope that this will go a long way to work with Mehran University, and of course, the US PICAS. And US PICAS partnership will go a long way to contribute into more environmental sustainability. With this, I really thank every participant, especially the scholars sitting here. Thank you very much. Thank you for participating. Thank you so much, sir. ये है मेहरान यूनिवर्सिटी जाम शोरूम। आप सुन रहे हैं न्यू FM 92.6। सुनते रहिए। अस्सलाम वालेकुम सामीन, आवां ॿुधी रहिया आहियो म्यूट FM 92.6 ऐं म्यूट FM 92.6 तां मां आहियां जो पंहिंजो आरजे जहान जे बिरोई। सामीन, म्यूट FM 92.6 तां पंहिंजे प्रोग्राम स्टूडियो 92.6 विद आरजे जहान जे नए एपिसोड में आवां खे खुशामदीद कयां थो। वेलकम, भली कार।
डियर लिसनर्स, आवांखे ॿुधाईंदो हलां त स्टूडियो 92.6 विद आरजे जहां ज़ैब म्यूट एफएम 92.6 तां नशर थींदड़ उहो प्रोग्राम आहे जंहिंजे हर नए एपिसोड में एकेडमिक एजुकेशन, सेल्फ डेवलपमेंट ऐं किताबनि सां रिलेटेड या कंहिं जनरल टॉपिक ते असां गुफ़्तगू कंदा आहियूं ऐं हर नए एपिसोड जे नए टॉपिक ते गुफ़्तगू करण जे लाइ असां सां गॾु हूंदा आहिनि गेस्ट जेके असां सां पंहिंजा एक्सपीरियंसिस शेयर करे रहिया हूंदा आहिनि ऐं गॾोगॾु पंहिंजा वीचार वंडे रहिया हूंदा आहिनि। असां वटि जेके गेस्ट मौजूदु हूंदा आहिनि उन्हनि सां यकीनन अव्हांजो बि इंटरेक्शन थी रहियो हूंदो आहे छाकाणि त असां अव्हांजा मोकिलियल पैगाम ऐं सवाल बि पंहिंजे प्रोग्राम में शामिलु कंदा आहियूं। प्रोग्राम में शामिलु थियण जे लाइ असांखे पंहिंजा सवाल फीडबैक या सजेशन ॾियणु न विसारींदा। अव्हां असांखे SMS करे था सघो। SMS करण जे लाइ टाइप कयो म्यूट FM MUTE FM स्पेस पंहिंजो नालो ऐं पैगाम ऐं सेंड कयो 4471 ते। साॻे ई वक़्तु अव्हां सां फेसबुक ते बि जुड़ी था सघो। फेसबुक ते जॉइन करण जे लाइ लॉगिन कयो www.facebook.com/mute.fm ते, जिते अव्हां पंहिंजा मैसेज असांखे इनबॉक्स करे था सघो या अव्हांजो को सजेशन आहे, को फीडबैक आहे या को टॉपिक सजेस्ट करणु था चाहियो त उहो बि अव्हां उते करे था सघो। ऐं गॾोगॾु अव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त असांजो जेको फेसबुक जो पेज आहे उते अव्हांखे ट्विटर, इंस्टाग्राम ऐं यूट्यूब जा लिंक वग़ैरह बि मिली वेंदा। सो अॼु जे असांजे हिन नए एपिसोड जो जेको मौज़ू आहे उहो आहे हाउ टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट थ्रू ऑनलाइन अर्निंग, यानी ऑनलाइन अर्निंग ज़रिए माशी तौरु इंडिपेंडेंट कीअं थिजे। अॼु जो जेको प्रोग्राम आहे उहो उन्हनि माण्हुनि जे लाइ ॾाढो अहम आहे जेके माशी तौरु परेशान आहिनि या अहिड़ा शागिर्द जंहिंजो जेको बैकग्राउंड आहे उहो एतिरो स्टेबल कोन्हे ऐं जेको आहे हू पंहिंजे पढ़ाई जो बोझ जेको आहे उहो पंहिंजे वालिदेन खां हटाए करे पाण खणणु था चाहिनि। ऐं यकीनन हिन मौज़ू ते गुफ़्तगू करण जे लाइ असां वटि हिन वक़्तु लाइव स्टूडियोज़ में गेस्ट बि जेको आहे मौजूदु आहिनि। देयर इज़ नो one who would guarantee you the security, financial independence and the lifestyle you want except yourself. ही मोटिवेशनल कोड जेको आहे उहो हैसा इन जा राइटर आहिनि, यानी अव्हां जेको बि लाइफ स्टाइल अचीव करणु था चाहियो, जेका लाइफ अव्हां गुज़ारणु था चाहियो, जेके शयूं जेको अव्हां एक्सपेक्ट था कयो त फ्यूचर में उहे अव्हां वटि हुजनि, त उन्हनि जो गारंटी जेको आहे अव्हांखे केर बि इंश्योर नथो करे सघे एक्सेप्ट यू। तव्हां ई आहियो जेको उन्हनि जे लाइ पंहिंजो ख़्वाबनि जे लाइ महिनत करे उन्हनि खे हासिलु करे था सघो। सो जेको कुझु अव्हांखे लाइफ में खपे उन्हनि जे लाइ हींअर सां ई जेको अव्हां एफर्ट्स वठणु शुरू कयो त जीअं फ्यूचर में अव्हांखे उहो सभु कुझु मिली सघे जिन जो अव्हांखे ख़्वाहिश आहे। त हलूं था अॼु जे हिन प्रोग्राम जे मौज़ू तरफ़ जेको आहे ऑनलाइन अर्निंग ज़रिए माशी तौरु इंडिपेंडेंट कीअं थिजे। ऐं हिन मौज़ू ते ॻाल्हाइण जे लाइ असां वटि हींअर लाइव स्टूडियोज़ में गेस्ट में मौजूदु आहिनि। उन्हनि जो तालुक़ु मेरान यूनिवर्सिटी जे शोबे सिविल इंजीनियरिंग सां आहे। सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में हिन वक़्तु 3 साल जा शागिर्द आहिनि ऐं गॾोगॾु ऑनलाइन अर्निंग में बि एक्सपर्टीज़ था रखनि। पाण गुज़िरियल कुझु महीननि खां ई अर्निंग ज़रिए चङो ख़ासो कमाए चुका बि आहिनि ऐं पंहिंजे कलीग्स खे बि ई अर्निंग लाइ मोटिवेट ऐं गाइड करे रहिया आहिनि। सो लेट्स वेलकम मिस्टर तौकीर अहमद पहवर। अस्सलाम वालेकुम तौकीर, कीअं आहियो तव्हां? वालेकुम अस्सलाम जाज़िब, बिल्कुलु अल्हम्दुलिल्लाह मां ठीकु आहियां। तव्हां ॿुधायो? फिट फाट तौकीर, मुंहिंजे ख़्याल सां तव्हां जेको आहे हींअर पंहिंजे कैंपस FM म्यूट FM 92.6 ते पहिरीं दफ़ा आया आहियो, त कीअं पियो लॻे अव्हांखे हिते म्यूट पंहिंजे जेको आहे कैंपस FM ते अची करे कीअं पिया महसूसु कयो अव्हां? जी बिल्कुलु, हिते हिकु पंहिंजाइत जो एहसासु थी रहियो आहे छो त म्यूट FM आवाज़ आहे मुंहिंजी यूनिवर्सिटी जो। बिल्कुलु तौकीर जी, त दिस इज़ दी वॉइस ऑफ माई यूनिवर्सिटी FM म्यूट FM 92.6। सो बिल्कुलु तौकीर, हर को जेको आहे हिन FM खे ऑन थो करे। जेके बि स्टूडेंट्स असां वटि हिते मेरान यूनिवर्सिटी में आहिनि सभिनी जे लाइ ही प्लेटफॉर्म आहे त हिते जेको आहे हर को जेके बि मेरान यूनिवर्सिटी जा स्टूडेंट आहिनि उहे यकीनन अची करे जेको आहे कंट्रीब्यूट करे था सघनि। तौकीर जी, त अॼु पंहिंजो जेको टॉपिक आहे उहो ऑनलाइन अर्निंग सां रिलेटेड आहे। त ऑनलाइन अर्निंग ॾिसो हिन वक़्तु पाण वटि जेको आहे इलाही माण्हुनि जा माशी हालात जेके आहिनि उहे सुठा कोन्हनि। इवन जेके स्टूडेंट्स पाण वटि ईंदा आहिनि यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में या लाइफ जे कंहिं बि फेज़ में, उन्हनि जो जेको बैकग्राउंड हूंदो आहे एतिरो स्टेबल न हूंदो। ऐं जेकॾहिं तौकीर पाण ॻाल्हि कयूं त फिज़िकल जेकॾहिं पाण किथे वञी करे कमु था कयूं त उहो बि हींअर जेको आहे इलाही मुश्किल थी पियो आहे। उते जेको आहे तव्हां जीअं ॾिसो पिया त माण्हुनि खे जेको आहे उते माना पंहिंजो फिज़िकल वर्क घणो करिणो पवंदो आहे ऐं उन जे मोट में जेको आहे उन्हनि खे एतिरो पैसो बि नाहे मिलंदो। त ऑनलाइन अर्निंग जी पाण वटि हींअर प्लेटफॉर्म्स खोड़ सारा अची विया आहिनि ऐं इलाही माण्हुनि खे यूज़ पिया कनि। जेकॾहिं सिर्फ़ु पाण तौकीर पाकिस्तान जी ॻाल्हि कयूं त मुंहिंजे ख़्याल सां पाकिस्तान में जेके पंजाब साइड जा जेके स्टूडेंट्स आहिनि उहे इवन पंहिंजे स्कूल लाइफ में बि चङो ख़ासो जेको अर्न पिया कनि। त तौकीर इहो आहे अवेयरनेस जे करे हुननि वटि अवेयरनेस जेको आहे हुते आहे ऐं पाण वटि हिते गाइड करण वारो कोन्हे। ॿियो त उन्हनि खे अवेयरनेस बि कोन्हे, उन्हनि खे ख़बर ई न आहे त की अहिड़ा बि अॼुकल्ह प्लेटफॉर्म्स मौजूदु आहिनि या अॼुकल्ह जेको आहे कमाइण एतिरो बि सवलो थी वियो आहे। त तौकीर, अव्हांखे कीअं ख़्यालु आयो हिन ऑनलाइन अर्निंग तरफ़ अचण जो? बिल्कुलु जाज़िब, अव्हांजो सुवालु वैलिड आहे। हर लिसनर खे हींअर इहो ई सुवालु ज़हन में ईंदो हूंदो त स्टार्ट कीअं कजे ऐं असां कीअं स्टार्ट कयो।
त ही स्टार्टिंग जेका मुंहिंजी फ्रीलांसिंग जी दुनिया में आहे उहा आहे 2018 खां। 2018 जे टाइम में मुंहिंजी हिकु त ताज़ी मेहरान यूनिवर्सिटी में हिकु एडमिशन थी हुई। एडमिशन खां बाद हिकु जुनून हो त आउं पाण हिते फिनेंशियली इंडिपेंडेंट हूंदुसि। उन हूंदे ई जेको हिकु पाकिस्तान इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री आहे जेका उन तरफ़ां हिकु डिजी स्किल्स प्रोग्राम लॉन्च थियो ऐं उन जो हिकु सेमिनार मेहरान यूनिवर्सिटी में मुनक़िद कयो वियो ऐं उनखे अटेंड करण खां पोइ मूंखे हिकु बिल्कुलु हिकु नई शइ जी मालूमात मिली जेका हुई फ्रीलांसिंग। ऐं तॾहिं खां ई मूं फ्रीलांसिंग जेकी दुनिया में क़दम रखियो ऐं हितां स्टार्टिंग कई ऐं हलंदे हलंदे न्यू स्किल्स सिखंदो वियुमि ऐं फ्रीलांसिंग जी दुनिया में पंहिंजो सर्विस प्रोवाइड करणु शुरू कयूं। यकीनन तौकीर बिल्कुलु जेको आहे अव्हांजो बि इलाही सारनि पंहिंजा जेके लिसनर्स आहिनि उन्हनि जो बि स्टोरी कुझु ईअं ई हूंदो। ऐं जीअं त तौकीर पाण ॾिसूं था न जेको आहे खोड़ सारा माण्हू फाइनेंशियली उहो जेको आहे न स्टेबल कोन हूंदा आहिनि। पोइ हू जेको आहिनि सोचींदा आहिनि त असां जेको आहे माना कुझु अर्न कयूं, पोइ उन जे लाइ हू टूल्स ॻोल्हींदा आहिनि। त इलाही माण्हुनि खे पोइ ख़बर न हूंदो आहे ऑनलाइन अर्निंग जो। हू वरी ॿियनि जेके आहिनि टूल्स खे इस्तेमालु कंदा आहिनि, जीअं फिज़िकली किथे कमु वग़ैरह कंदा आहिनि, कंहिं जेको आहे पंप वग़ैरह ते बीही करे कमु वग़ैरह कयूं ऐं पैसा या ट्यूशन वग़ैरह पढ़ाए करे। त माना घटि माण्हू हूंदा आहिनि जेके हिन ऑनलाइन अर्निंग जी जिनखे जेको आहे अवेयरनेस हूंदी आहे इन तरफ़ ईंदा आहिनि। कुझु माण्हुनि खे वरी जेको आहे न इहो ख़बर बि न हूंदो त ऑनलाइन अर्निंग करणु अॼु छो ज़रूरी आहे। जीअं त पाण ॾिसूं पिया न जेको आहे दुनिया में हींअर इलाही जेको आहे मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जेको आहे घणा माण्हू आहिनि ऑनलाइन अर्निंग जेको आहे तरफ़ हलंदा पिया अचनि। इवन जेके स्कूल जा स्टूडेंट्स आहिनि उहे बि अॼुकल्ह जेको आहे फ्रीलांसिंग कनि पिया। त तव्हांखे छा थो लॻे तौकीर त ऑनलाइन अर्निंग छो ज़रूरी आहे? बिल्कुलु जाज़िब, फ्रीलांसिंग ऐं जेको फिज़िकल जेको पाण कमु कंदा आहियूं उहो बिल्कुलु ई हिकु सिके जा ॿ पासा आहिनि, बिल्कुलु ई मुख़्तलिफ़ आहिनि। जेको फ्रीलांसिंग आहे तव्हां हुन में बी योर ओन बॉस, मतिलबु तव्हां पंहिंजा बॉस पाण आहियो। हिते तव्हांखे केर बि पंहिंजी टाइम लिमिट में नथो रखी सघे। तव्हां जंहिं टाइम चाहियो था, जंहिं जॻह ते चाहियो था, उते वेही तव्हां कमु करे सघो था। जीअं अव्हांखे हिकु मिसाल हींअर उहो ॾींदुसि, जीअं त हींअर कोरोना जी सिचुएशन खां पोइ जेको बि फिज़िकल कमु जेको थी रहियो हो उहो तक़रीबन 100% ताईं जीअं चइजे त उहो बीह रहियो हो। त ऑनलाइन अर्निंग ई हुई जंहिं मुल्कनि जी इकोनॉमीज़ खे बचायो, माण्हुनि खे हिकु सहारो ॾिनो। ऐं जेको मुंहिंजो बेसिकली जेको आउं स्टार्टिंग हो कमु फ्रीलांसिंग तरफ़ अचणु, स्किल्स त मूं वटि पहिरीं बि हुयूं। जेको फ्रीलांसिंग जी अर्निंग जेका मूं शुरू कई आहे उहा लॉकडाउन खां पोइ कई आहे, जॾहिं फिज़िकल कमु हलो ई न हो। तंहिं करे ही तव्हां फ्रीलांसिंग हिकु अहिड़ो कमु आहे जेको तव्हां कंहिं बि सिचुएशन में कंहिं बि टाइम ते करे सघो था। ऐं इहो ई सबबु आहे त फ्रीलांसिंग खे फिज़िकल कम खां वधीक तरजीह हासिल आहे। बिल्कुलु तौकीर, तव्हां बिल्कुलु सही चयो आहे। ऐं जीअं त तव्हां ॻाल्हि कई न टाइम लिमिट बि कोन हूंदो आहे। ॿियो त माना अव्हांखे केरु बाउंड करण वारो बि कोन्हे। तव्हां पंहिंजी मर्ज़ी जा मालिक आहियो। जंहिं टाइम वेही अव्हां जेको आहे लैपटॉप वग़ैरह कुझु बि अव्हां खोले करे जेको आहे पंहिंजा स्किल्स यूज़ करे अव्हां जेको आहे कमु कयूं ऐं उन तां पैसा कमायो। अच्छा तौकीर, ऑनलाइन अर्निंग जे लाइ बि ॾिसो हिन वक़्तु माना इलाही सारा प्लेटफॉर्म्स मौजूदु आहिनि। त जेको आहे न पंहिंजे ऑडियंस बि यकीनन सोचे रहियो हूंदो त हिननि मां कहिड़ो बेस्ट रहंदो, उन तरफ़ बि पाण हलंदासीं। पर अव्हां खां मां पुछणु चाहींदुमि त तौकीर तव्हां कहिड़ा कहिड़ा प्लेटफॉर्म ऐं स्किल इस्तेमालु करे ऑनलाइन कमायो पिया? जी बिल्कुलु जाज़िब, हींअर त आउं फाइवर ते कमु कंदो आहियां ऐं जेको मुंहिंजो जेको स्किल आहे उहो मुंहिंजी पढ़ाई हिसाब सां ई आहे। ऐं स्ट्रक्चरल जेके डिज़ाइन्स आहिनि सिविल इंजीनियरिंग सां रिलेटेड आहे, जेको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आहे, कॉस्ट एस्टिमेशन आहे, उन हवाले सां ई कमु कंदो आहियां। बाक़ी ऐं गॾोगॾु फाइवर खां अलावा ॿिया केतिरा ई प्लेटफॉर्म ऐं केतिरियूं स्किल्स आहिनि जंहिं ते असांजा लिसनर्स कमु करे सघनि था। जीअं आउं तव्हांखे प्लेटफॉर्म मिसाल ॾींदो हलां त तव्हां यूट्यूब ते बि कमु करे सघो था, उतां बि अर्निंग करे सघो था। तव्हां अपवर्क ते बि कमु करे सघो था ऐं उतां अर्निंग करे सघो था। तव्हां ब्लॉगिंग बि करे सघो था। जाज़िब अव्हां पाण बि ब्लॉगिंग सां कुझु अरसे खां वास्तो रखो था, अव्हांखे बि हिन में महारत हासिल आहे, वधीक तव्हां हिन बारे में ॻाल्हाए सघो था। बिल्कुलु तौकीर, ब्लॉगिंग जे बारे में बि जेको आहे असां यकीनन गुफ़्तगू कंदासीं। अच्छा तौकीर, प्लेटफॉर्म्स त वाक़ई पाण वटि खोड़ सारा आहिनि। यूट्यूब आहे, ठीकु आहे। इवन अॼुकल्ह तौकीर पंहिंजा जेके लिसनर्स आहिनि जिन खे ख़बर न हुजे त उहे हैरत में पइजी वेंदा त अॼुकल्ह माण्हू फेसबुक खां पिया कमाइनि। जेके फेसबुक जा पेजिस आहिनि इवन उन्हनि खां पिया कमाइनि। ऐं असां ॾिसूं था त तौकीर इलाही माण्हू जेको आहिनि पंहिंजो खोड़ सारो वक़्तु सोशल मीडिया ते जेको आहे उते हूअ यूज़ पिया कनि। उन माना का प्रोडक्टिविटी कोन्हे, बसि रुगई जेको आहे न्यूज़ फीड खे पिया स्क्रॉल कनि, ठीकु आहे। उन्हनि खे मोट में कुझु बि न पियो मिले। त घटि माण्हू आहिनि जेके इंटरनेट इस्तेमालु कंदा आहिनि ऐं उन खां कमाईंदा बि आहिनि। जेको पाण वटि अक्सरियत आहे हिन वक़्तु हींअर पंहिंजे हिन रीजन में त अहिड़ा माण्हू आहिनि जेके फ़क़ति इंटरनेट इस्तेमालु कंदा आहिनि, पैसा उन ते ख़र्चु कंदा आहिनि, कमाईंदा कोन्हनि। अच्छा तौकीर, जी तव्हां फाइवर जी ॻाल्हि करे आया त यकीनन जेको आहे हाणे सुवाल इहो बि पैदा थिए थो त फाइवर छा आहे ऐं उन ते कीअं कमु कबो आहे। त इन जे बारे में बि अव्हां जेको आहे असांखे ॿुधायो त बहितरु रहंदो इहो बि। जी जाज़िब, फाइवर हिकु इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म आहे जिते मुख़्तलिफ़ कंट्रीज़ जा बायर
ऐं मुख़्तलिफ़ कंट्रीज़ जा सेलर पंहिंजो सर्विसिस प्रोवाइड कनि था ऐं सर्विसिस ख़रीद कनि था। ऐं फाइवर ते हिकु सेलर जो अकाउंट हूंदो आहे, हिकु बायर जो अकाउंट हूंदो आहे। सेलर जो अकाउंट उहो आहे त जेको हू सर्विसिस प्रोवाइड करे पियो, मतिलबु का शइ हू हुते हू विकिणे पियो या का पंहिंजी सर्विसिस प्रोवाइड करे थो ऐं पंहिंजी मर्ज़ी मुताबिक़ हुते हिकु मख़सूस क़ीमत जे हिसाब सां अर्निंग करे सघे थो। ॿियो जेको बायर जो अकाउंट आहे हुते डिफरेंट कंट्रीज़ जा, जीअं यूनाइटेड स्टेट्स आहे या कनेडा आहे, उतां खां माण्हू अचनि था ऐं हू हुते सर्विसिस खे सर्च कनि था ऐं डिफरेंट कंट्रीज़ मां हू सेलर ॻोल्हे पंहिंजे कमु मुताबिक़ उन्हनि खे हायर कनि था ऐं उन्हनि खे पे कनि था। ऐं फाइवर जो जेको प्रोसीजर आहे उहो बिल्कुलु आसानु आहे। असांजे लिसनर्स मां जेको बि सोशल मीडिया सां वास्तो रखे थो ऐं फेसबुक वग़ैरह इस्तेमालु कंदो रहियो आहे त हू आसानी सां फाइवर जो अकाउंट ठाहे सघे थो। हिन जो प्रोसीजर बिल्कुलु ई आसानु आहे। हिन में तव्हांखे सिर्फ़ु हिकु पंहिंजी पर्सनल प्रोफाइल ठाहिणी आहे। पर्सनल प्रोफाइल में तव्हां पंहिंजी प्रोफाइल पिक्चर ॾींदव, पंहिंजी डिटेल ॾींदव त ऐं कहिड़ी कहिड़ी सर्विसिस प्रोवाइड कंदा आहियो, तव्हांजो एक्सपीरियंस छा आहे, उहा डिटेल ॾींदव। उनखां बाद में तव्हांखे गिग ठाहिणी हूंदी आहे। गिग मतिलबु आहे त तव्हां हिकु पंहिंजो दुकानु खोलियो आहे त ही शइ हिन दुकान ते विकिणंदुसि ऐं उहो दुकानु आहे हाणे। ऐं फाइवर हिकु मार्केट आहे, हुन में जेके क्लाइंट आहिनि हू हुते घुमनि पिया ऐं जंहिंखे दुकान खां वठिणो आहे ऐं जंहिंजी सर्विस सुठी लॻी उहो हुनखे कॉन्टेक्ट कंदो ऐं उहो प्रोजेक्ट हुनखे अवार्ड कंदो सेलर खे। त जाज़िब इहो हूंदो आहे प्रोसेस फाइवर जो। अच्छा तोकीर हिते यकीनन पाण वटि मेरान यूनिवर्सिटी जा बि खोड़ सारा शागिर्द हूंदा या नवां शागिर्द जिन जो नओं जेको एडमिशन थियो हूंदो त यकीनन उहे हिन वक़्तु हिन प्रोग्राम खे ॿुधी रहिया हूंदा त उन्हनि जी बि ख़्वाहिश हूंदी न त असां वटि जेकॾहिं अहिड़ो को माण्हू यूनिवर्सिटी में अवेलेबल आहे जेको ही कमु करे पियो ऐं उन जा सुठा एक्सपर्टीज़ आहिनि त असां उन खां जेको आहे इहो शइ सिखूं, फाइवर सिखूं, कहिड़ा कहिड़ा स्किल्स आहिनि उन्हनि खां असां जेको आहे नॉलेज हासिलु कयूं। त तोकीर जेकॾहिं म्यूट जा शागिर्द आहिनि उहे अव्हां सां मिली करे फाइवर सिखणु चाहिनि था, तव्हां उन्हनि खे जेको आहे कीअं मदद कंदव, इन जो जेको आहे तोकीर अव्हां खां जवाबु वठंदासीं। पर उन खां पहिरियां हिन वक़्तु जेको आहे हिकिड़े म्यूज़िकल ब्रेक जो टाइम थी वियो आहे। सो हलूं था म्यूज़िकल ब्रेक तरफ़, उनखां बाद में ईंदासीं, पोइ जेको आहे इन पंहिंजे सवाल खे कंटिन्यू कंदासीं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कोरोना के दौरान बहुत सी औरतों को माली, जिस्मानी, ज़हनी और जिनसी घरेलू तशद्दुद का सामना करना पड़ रहा है। हुकूमत पाकिस्तान ने घरेलू तशद्दुद का निशाना बनने वाली औरतों के लिए खुसूसी हेल्पलाइन 1099 के साथ हेल्पलाइन 1099 ऐप का आगाज किया है ताकि हमारे इदारे उनकी भरपूर मदद कर सकें। अगर आप या आपके जानने वाले घरेलू तशद्दुद का शिकार हैं, तो फौरी तौर पर हेल्पलाइन 1099 ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। हंगामी हालात की सूरत में जहां आपकी या किसी की जान खतरे में हो, लाल बटन का इस्तेमाल करें, जिससे मुतल्लिका इदारे आपकी मदद के लिए फौरी हरकत में आ जाएंगे। तफसीली शिकायत के लिए सब्ज बटन का इस्तेमाल करें। याद रखिए, घरेलू तशद्दुद कानूनन जुर्म है और हम सबको मिलकर इसे रोकना है। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान। This is Mute FM 92.6. This is Mute FM 92.6, Campus FM radio by Mehran University, Jamshoro. वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान ने आपके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक खुसूसी हेल्पलाइन 1099 के साथ हेल्पलाइन 1099 ऐप का आगाज किया है, जिसमें बच्चों पर जिनसी तशद्दुद और मुशक्क़त, ख़वातीन पर तशद्दुद और हिरासगी, अक़लियतों के हुकूक, माज़ूर अफराद के हुकूक, बुजुर्ग शहरियों और ख्वाजा सराओं के हुकूक और दीगर हुकूक से मुतालिक शिकायत दर्ज की जा सकती हैं, ताकि मुतालिका इदारे उनकी भरपूर मदद कर सकें। अगर आप या आपके जानने वाले किसी भी किस्म के तशद्दुद या इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी का शिकार है, तो फौरी तौर पर हेल्पलाइन 1099 ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और होम स्क्रीन पर अपना नाम और फोन नंबर दर्ज करके साइन अप करें। हंगामी हालात की सूरत में जहां आपकी या किसी की जान खतरे में हो, लाल बटन का इस्तेमाल करें, जिससे मुताल्लिका इदारे आपकी मदद के लिए फौरी हरकत में आ जाएंगे। तफसीली शिकायत के लिए सब्ज बटन का इस्तेमाल करें, जिसमें आप तहरीरी शिकायत के साथ वीडियो, तस्वीर और ऑडियो सबूत भी जमा करवा सकते हैं। इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए याद रखिए, हेल्पलाइन 1099 और हेल्पलाइन 1099 ऐप, वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान। Department of Biomedical Engineering, Mehran University of Engineering and Technology, Jamshoro, Sindh,
established the Department of Biomedical Engineering as a separate entity in June 2011. However, the bachelor's program was initiated back in 2003 and is the first ever among the public universities. The Department of Biomedical Engineering, Mehran University of Engineering and Technology, aims to provide the high quality of education in the multidisciplinary fields of biomedical engineering in a challenging ambience in which its students actively taking part in exhibitions, competitions, seminars, workshops, and other co-curricular activities. The basic motivation behind the transformation of various engineering programs at Mehran University of Engineering and Technology according to the outcome-based education system was the decision taken by the Pakistan Engineering Council to make Pakistan a member of the Washington Accord. The work in this regard started in the mid of 2015. The Department of Biomedical Engineering at MUTE also commenced its journey towards OBE from October 2017. The Department of Biomedical Engineering is committed to explore the engineering principles that can be used to solve the problems in the field of medical and biological sciences. वेलकम बैक फ्रॉम द म्यूजिकल ब्रेक। त सामाईन असां जेको आहे फाइवर सां रिलेटेड ऐं ऑनलाइन अर्निंग सां रिलेटेड गुफ्तगू करे रहियासीं ऐं असां वटि जेको आहे स्टूडियोज़ में गेस्ट बि मौजूदु आहिनि तौक़ीर अहमद पैवर। त ब्रेक खां पहिरीं असां ॻाल्हि पे कई त फाइवर छा हूंदी आहे ऐं उन ते जेको आहे माण्हू कीअं थो कमु करे सघे, उनजो प्रोसीजर छा हूंदो आहे। ऐं पोइ लास्ट में जेको आहे असां तौक़ीर खां क्वेश्चन कयो हो त जेकॾहिं असांजे मेहरान यूनिवर्सिटी जा के अहिड़ा शागिर्द आहिनि जेके चाहिनि था त तौक़ीर सां मिली करे उन्हनि खां जेको आहे फाइवर सिखनि त ऐं उन ते जेको आहे कमु कीअं कबो आहे इन जे बारे में इंफॉर्मेशन हासिलु कनि त तौक़ीर जेको आहे अवां उन्हनि खे कीअं था फैसिलिटेट करे सघो जेकॾहिं केरु अवां सां मिलणु चाहे यूनिवर्सिटी में त। जी जाज़े बिल्कुलु, जीअं त पंहिंजे हिन प्रोग्राम जो मक़सदु ई इहो हो त जेके पंहिंजे लिसनर्स आहिनि उन खे गाइड कयूं। तव्हां मूंखे जीमेल पिणु करे सघो था ऐं मुंहिंजी जीमेल आहे touqeepanhwar@gmail.com ऐं इन मेल में जेको तव्हांजो कुझु क्वेश्चन वग़ैरह आहे, कुझु क्यूरी आहे, तव्हां उते मूंखे लिखी मोकिले सघो था ऐं इनशाला जल्द अज़ जल्द आउं तव्हांखे जवाबु ॾींदुसि। यकीनन तौक़ीर इलाही सारा पंहिंजा स्टूडेंट्स हूंदा जेके अवां सां कॉन्टेक्ट कंदा बि ऐं हिन वक़्तु बि करण जी कोशिशि कंदा हूंदा जेके असांखे हिन वक़्तु जेको आहे ॿुधी रहिया आहिनि। त तौक़ीर जी तव्हांखे ख़बर आहे त पाण जेको आहे पंहिंजे लिसनर्स जा पैगाम बि जेको आहे शामिलु कंदा रहंदा आहियूं। त हींअर जी पाण ब्रेक ते वियासीं त असां वटि जेके आहिनि खोड़ सारा क्वेश्चन्स बि अची चुका आहिनि ऐं जेके असांजा लिसनर्स आहिनि उन्हनि खे मां हिकु दफ़ा दुबारा जेको आहे ॿुधाईंदो हलां त SMS जो तरीक़ो जेको आहे उहो हिन तरह सां आहे त अवां टाइप कयो म्यूट FM MUTE FM स्पेस पंहिंजो नालो ऐं पैगाम ऐं सेंड कयो 4471 ते। असां कोशिशि कंदासीं तव्हांजा जेके बि पैगाम असां वटि अचनि पिया उन्हनि खे शामिलु कंदा हलूं। ऐं जेको आहे तौक़ीर जी त फाइवर बि न हिकिड़ो वॾो हिकिड़ो मार्केट आहे, ठीकु आहे, वास्ट प्लेटफॉर्म आहे। त उते खोड़ सारा स्किल्स जेको आहे माण्हू खणी करे उते वेठा आहिनि ऐं कमु पिया कनि। त असां वटि हिन वक़्तु तौक़ीर हिकिड़ो सुवालु आयो आहे जेको इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट मां फातिमा जेको असां खां इहो सुवालु पुछा कनि पिया त छा इहो पॉसिबल आहे त मां पंहिंजे फील्ड छॾे ॿिए कंहिं फील्ड सां रिलेटेड कमु कयां फाइवर ते। छा चवंदो इन सवाल ते तौक़ीर? ऐं तव्हांखे बिल्कुलु ई इहो रिकमेंड न कंदुसि त तव्हां पंहिंजी फील्ड खे छॾे करे फ्रीलांसिंग न अचो। तव्हां इहो करे सघो था त पंहिंजी फील्ड सां गॾोगॾु ई फ्रीलांसिंग खे हलायो। अहिड़ियूं केतिरियूं सर्विसिस आहिनि जेके तव्हां पंहिंजी फील्ड सां गॾोगॾु प्रोवाइड करे सघो था, जीअं त तव्हां कॉन्टेंट राइटिंग बि करे सघो था ऐं ॿियूं बि खोड़ सारियूं स्किल्स आहिनि जेके तव्हां सिखी करे उहे सर्विसिस प्रोवाइड करे सघो था। मुंहिंजी सलाह इहा आहे त इहो बेस्ट हूंदो त तव्हां मल्टीटास्किंग कयो, जीअं त पंहिंजी पढ़ाई खे पंहिंजी फील्ड खे बि गॾोगॾु खणे हलो ऐं फ्रीलांसिंग बि गॾु कंदा हलो। ऐं केतिरियूं ई आसान स्किल्स आहिनि जेके तव्हां करे सघो था। ऐं इन मल्टीटास्किंग जो मिसाल आऊं तव्हांखे जहाज़ेब जेको असांजो आरजे आहे उनजो ॾींदुसि, जेके पाण सिविल इंजीनियरिंग पढ़ी बि रहिया आहिनि, फ्रीलांसिंग बि करे रहिया आहिनि ऐं हिते आरजे तौरु कमु सर अंजाम बि ॾेई रहिया आहिनि। थैंक यू। बिल्कुलु तौक़ीर असां जेको आहे मल्टीटास्किंग जाम कंदा आहियूं। जीअं अवां बि जेको आहे हिकिड़ो वॾो एग्ज़ाम्पल मुंहिंजे साम्हूं वेठल आहियो। मूंखे ख़बर आहे अवां बि जेको आहे पंहिंजे पढ़ाई सां गॾोगॾु फ्रीलांसिंग बि कयो पिया, यूट्यूब ते बि ऐं फेसबुक ते पेजिस वग़ैरह बि अवां रन कयो पिया। त इहो जेको आहे हिकिड़ो मल्टीटास्किंग आहे ऐं उहो यकीनन जेको आहे माण्हू ते पाण ते डिपेंड थो करे त उन्हनि शयुनि खे मैनेज कीअं थो करे। अच्छा तौक़ीर सवाल त जाम अचनि पिया, सो हिकिड़ो ॿियो सवाल जेको आहे असां हींअर शामिलु कंदा हलंदासीं। सवाल जेको आहे इसाम असां खां पुछियो आहे जिन जो तालुक़ु जेको आहे केमिकल डिपार्टमेंट सां आहे।
उहे पुछनि था त कहिड़ा कहिड़ा एरियाज़ आहिनि जिन में फाइवर ते कमु करे थो सघिजे या कहिड़ा कहिड़ा स्किल आहिनि जिन में कमु करणु जेको आहे उहो कंपेरेटिवली बहितर रहंदो। जी, सम फ्रीलांसिंग जी दुनिया में खोड़ सारियूं स्किल्स आहिनि जेके तव्हां प्रोवाइड करे पंहिंजी अर्निंग करे सघो था। जेके हिते मोस्टली जेके पाकिस्तान में पॉपुलर आहिनि उन्हनि में हिकु कंटेंट राइटिंग आहे, तव्हांजी ग्राफिक डिज़ाइनिंग आहे, वीडियो एडिटिंग आहे, तव्हांजी एसीओ ब्लॉगिंग जेको आहे उहो आहे, ऐं ॿियूं बि खोड़ सारियूं स्किल्स आहिनि जेके तव्हां आसानी सां सिखी करे पंहिंजी सर्विसिस प्रोवाइड करे सघो था। ऐं आउं तव्हांखे इहो रिकमेंड कंदुसि त तव्हां वाइट बोर्ड एनिमेशन सिखो, जंहिंजी फाइवर ते हींअर डिमांड वधीक आहे। बिल्कुलु तौकीर तव्हां जेको आहे सुठा जेके आहिनि स्किल्स हाईलाइट करे आया आहियो पोयां, ऐं जेतिरो मूंखे ख़बर आहे तौकीर हुन सां गॾोगॾु इलाही सारा अहिड़ा बि स्किल्स आहिनि जेके माना असांजे डिपार्टमेंट सां बि माना जेके असांजा इंजीनियरिंग जा डिपार्टमेंट आहिनि उन्हनि सां बि तालुक रखनि था। मिसाल तौरु जेकॾहिं असां वटि कोई स्टूडेंट आहे जेको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो आहे या कंप्यूटर सिस्टम जो आहे त यकीनन उन्हनि खे प्रोग्रामिंग त ईंदी हूंदी, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग त फाइवर ते जेको आहे अव्हांखे ॿुधाईंदो हलां तव्हां कंप्यूटर प्रोग्रामिंग बि करे था सघो। गॾोगॾु जेकॾहिं तव्हांखे वेब डिज़ाइनिंग थी अचे त उहा बि थी सघे हुते। ऐं प्लस में तौकीर फाइवर ते इवन ट्यूटर्स बि अची विया आहिनि। अहिड़ा अहिड़ा गिग लॻियल आहिनि त जेको आहे मां तव्हांखे मैथमेटिक्स पढ़ाईंदमि या फलाणे सब्जेक्ट में मुंहिंजी एक्सपर्टीज़ आहे। बिल्कुलु जाज़िब, तव्हां सही चई रहिया आहियो। हींअर काफ़ी महिरान जे शागिर्द आहिनि जेके इंजीनियरिंग जा डिफिकल्ट कोर्सिस आहिनि उहे इंटरनेशनली स्टूडेंट्स खे सेखारनि पिया ऐं खोड़ सारी अर्निंग हुन मां करे रहिया आहिनि। बिल्कुलु तौकीर जेकॾहिं माण्हू फिज़िकल ट्यूशन थो पढ़ाए त उन जे कंपेरिज़न में मूंखे लॻे थो त जेको ऑनलाइन माण्हू टीच कंदो आहे इहो जेको आहे इलाही बहितर रहंदो, छाकाणि त उन में अव्हांखे किथे वञण जी ज़रूरत कोन्हे। जस्ट तव्हां जेको आहे पंहिंजो लैपटॉप या मोबाइल जेका बि शइ गैजेट्स आहिनि ऑन करे ऐं जेको आहे टॉपिक्स जेके बि आहिनि पंहिंजे क्लाइंट्स खे सम्झाए उन्हनि खां जेको आहे अर्न करे था सघूं उन सां। त तौकीर नेक्स्ट क्वेश्चन हिकिड़ो वठंदासीं, छाकाणि त पाण वटि हिन वक़्तु मैसेज बि ॾाढा अची रहिया आहिनि। त लिसनर्स जेके आहिनि असांजा उन्हनि खे ॿुधाईंदो हलां त असां वटि जेके बि अव्हांजा SMS अचनि पिया असां कोशिशि कंदासीं उहे सभु SMS शामिलु कयूं, पर जेकॾहिं कंहिंजो SMS रहिजी थो वञे त उन जे लाइ दिलि सां जेको आहे मौज़रत। सो तौकीर असां वटि हिकिड़ो ॿियो सुवाल जेको मां हींअर अव्हां खां पुछणु चाहींदमि, इहे सुवाल जेको आहे बेसिकली रायचंद पुछियो आहे जंहिंजो तालुक़ु जेको आहे पंहिंजे डिपार्टमेंट सां आहे, सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट सां। उहो पुछनि था त एज वारो फैक्टर जेको आहे उहो मैटर करे थो ऑनलाइन अर्निंग में, ऐं पेमेंट मेथड जेके आहिनि उहे कहिड़ा आहिनि फाइवर जा या इंटरनेशनली जेको आहे पेमेंट्स वठण जे लाइ। जी जाज़िब, जीअं तव्हांजो पहिरियों सुवाल हो छा एज फैक्टर डिपेंड करे थो फाइवर जी अर्निंग ते, त मुंहिंजो जवाबु इहो रहंदो बिल्कुलु न। ऐं तव्हांखे पाकिस्तानी फ्रीलांसर जो मिसाल ॾींदुसि जंहिं 14 सालनि जी उमिरि खां फ्रीलांसिंग करणु शुरू कई आहे ऐं हू 20 या 21 साल जी उमिरि में मिलियनेयर थिया आहिनि। हिन मां इहो साबित थिए थो त एज फैक्टर जो फ्रीलांसिंग ते को बि असरु नथो पवे। ऐं जेको तव्हां ॿियो सुवाल पुछियो त कहिड़ा कहिड़ा पेमेंट मेथड आहिनि जेके असीं ऑनलाइन अर्निंग में इस्तेमालु करे सघूं था। जाज़िब, त जेकॾहिं अव्हांजा क्लाइंट USA, कैनेडा या जेके मोस्टली जेके डेवलप्ड कंट्रीज़ आहिनि उन्हनि मां आहिनि त तव्हां सिंपली जेस कैश या ईज़ी पैसा जे थ्रू बि पेमेंट हासिलु करे सघो था। अगरि जेकॾहिं अव्हांजा क्लाइंट जेके डेवलपिंग कंट्रीज़ खां आहिनि त उतां खां तव्हां डिफरेंट वेस्टर्न यूनियन सां पेमेंट घुराए सघो था। ऐं उन खां अलावा हिकु ॿियो मेथड बि आहे जेको फाइवर ख़ुदि प्रोवाइड कंदो आहे, जेको फाइवर जे थ्रू बि अव्हीं पेमेंट वठी सघो था। उनजो प्रोसेस इहो आहे त सिर्फ़ु तव्हांखे हिकु पायोनीर जेको हिकु मनी ट्रांसफरिंग कंपनी आहे उनजो तव्हांखे अकाउंट ठाहिणो पवंदो ऐं उहो फाइवर सां कनेक्ट करिणो पवंदो। उन खां बाद में अव्हां पंहिंजी पेमेंट डायरेक्टली जेस कैश या पंहिंजे बैंक अकाउंट ते घुराए सघो था। जी जाज़िब। जी बिल्कुलु तौकीर हिन वक़्तु जीअं त पाण वटि इंटरनेट जो जेको आहे दौरु आहे, पाण वटि नवां टेक्नोलॉजीज़ ॾींहों ॾींहुं जेको आहे उहे इन्वेंट पिया थींदा वञनि, ऐं हिन वक़्तु जेको आहे काफ़ी आसान थी पियो आहे मनी ट्रांसफ़र करणु हिकिड़े कंट्री खां ॿिए कंट्री ॾे। अव्हां मुंहिंजे ख़्याल सां जेके मेथड्स हींअर ॿुधाया आहियो पोइ ते, त हुन खां अलावा ॿिया बि खोड़ सारा यकीनन मेथड्स हूंदा जंहिंजे थ्रू जेको आहे असांजा जेके लिसनर्स आहिनि जेकॾहिं उहे फ्रीलांसिंग कनि था त उहे पंहिंजा पेमेंट्स वठी था सघनि। अच्छा तौकीर हिकिड़ो ॿियो सुवाल जेको आहे पाण पंहिंजा जेके लिसनर्स पाण खे क्वेश्चन सेंड पिया कनि उन्हनि मां हिकिड़ो ॿियो सुवाल पाण खणंदासीं। सुवाल जेको आहे सना पुछनि पिया जिन जो तालुक़ु जेको आहे मेकाट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट सां आहे। हू चवनि थियूं त अहिड़ा कहिड़ा स्किल्स आहिनि जिन में फीमेल टैलेंट जी वधीक डिमांड आहे। जी सना, फ्रीलांसिंग हिकु अहिड़ी फील्ड आहे जंहिं में जेंडर डिफरेंस खे नथो ॾिठो वञे। जेके टूल्स मेल यूज़ करे सघनि था उहे गर्ल्स बि यूज़ करे सघनि थियूं। त तव्हांखे इहो कॾहिं बि फील न करणु खपे त आउं छोकिरी आहियां त आउं फ्रीलांसिंग नथी करे सघां। तव्हां बिल्कुलु ई फ्रीलांसिंग करे सघो था ऐं खोड़ सारियूं फील्ड्स आहिनि जिते छोकिरियूं पंहिंजूं सर्विसिस प्रोवाइड करे रहियूं आहिनि। ऐं आउं अव्हांखे सजेस्ट कंदुसि त अव्हां डिज़ाइनिंग वारी फील्ड ऐं कॉन्टेंट राइटिंग वारी फील्ड में वञो, छो त जनरली मूं जेको ॾिठो आहे त मोस्टली जेके गर्ल्स आहिनि उहे आर्ट ऐं जेको डिज़ाइनिंग में माहिर हूंदियूं आहिनि, त जेको इहा फील्ड अव्हां लाइ सुटेबल रहंदी।
जी बिल्कुलु तौकीर असां वटि अॼुकल्ह जेको आहे हींअर इहे जीअं त ऑनलाइन अर्निंग वारा प्लेटफॉर्म्स आहिनि, मार्केट प्लेसिस आहिनि, फाइवर आहे, अपवर्क ऐं फ्रीलांसर, इहे जेके बि आहिनि इन्हनि ते हींअर त इहा जेका जेंडर वारी ॻाल्हि आहे आउटडेट जेको आहे थी चुकी आहे। माना उते इट डज़ंट मेक्स एनी डिफरेंस, तव्हां छोकिरी आहियो छोकिरा आहियो, ऐं पंहिंजा स्किल्स जेको आहे उते प्रोवाइड करे अर्न करे था सघो। बसि फ़र्क़ु इन ॻाल्हि जी आहे तव्हां केतिरा पंहिंजा बेस्ट जेके आहिनि सर्विसिस प्रोवाइड था कयो, त अहिड़े हिसाब सां पोइ जेको आहे उते कमु करे था सघो। अच्छा तौकीर असांखे जेको आहे न सिर्फ़ु इन दी कैंपस माण्हू ॿुधनि था पर आउट ऑफ द कैंपस बि ॿुधनि पिया। त हिन वक़्तु असांजा जेके लिसनर्स आहिनि उहे खोड़ सारा आउट ऑफ द कैंपस पंहिंजे जामशोरो, कोटड़ी ऐं इन्हनि इलाइक़नि जा बि आहिनि, सिंधी यूनिवर्सिटी जा बि स्टूडेंट्स आहिनि। त असांखे जेको आहे हिकिड़ो मैसेज आयो आहे, बल्कि हिकिड़ो क्वेश्चन मां जेको हींअर रिसीव कयो आहे, उहो जेको आहे सिंधी यूनिवर्सिटी जे पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट सां तालुक़ु रखंदड़ जेको आहे आफ्ताब असांखे सवाल पुछा कयो आहे त छा फाइवर ते जेको आहे अचण जे लाइ को कोर्स वग़ैरह फाइवर जो करणु लाज़मी आहे या बग़ैर कंहिं कोर्स जे जेको आहे उनखे जॉइन करे था सघो? जी आफ्ताब, फ्रीलांसिंग हिकु अहिड़ी फील्ड आहे जिते तव्हां पंहिंजूं स्किल्स खे विकिणो था, तव्हां पंहिंजी सर्विस प्रोवाइड कयो था पंहिंजी स्किल जे हिसाब सां, ऐं तव्हां हुतां अर्न कयो था। पर बिल्कुलु बि ईअं न आहे त जेकॾहिं अव्हां वटि स्किल न आहे त तव्हां फ्रीलांसिंग नथा करे सघो। फाइवर त हिकु बेसिक प्लेटफॉर्म आहे जंहिं ते अव्हां आसानी सां पंहिंजो कमु करे सघो था। तव्हांखे कोर्सिस वग़ैरह करणा पवंदा त उहे करणा पवंदा पंहिंजी स्किल डेवलप करण लाइ। जेकॾहिं अव्हां वटि स्किल आहे त तव्हां आसानी सां फाइवर ते कमु करे सघो था। ऐं उन खां अलावा जेकॾहिं अव्हां वटि स्किल न आहे त इन जो हरगिज़ इहो मतिलबु न आहे त तव्हां फ्रीलांसिंग नथा करे सघो। तव्हां बिल्कुलु फ्रीलांसिंग करे सघो था। उन जो मिसाल ॾींदुसि त हिते काफ़ी जेके सिविल इंजीनियर्स आहिनि उहे लॉ जी फील्ड में पंहिंजूं ख़िदमतूं सर अंजाम ॾियनि पिया एज़ अ फ्रीलांसर। उहो कीअं त हुननि जी सिर्फ़ु हिकु स्किल हुनजी जेका आहे उहा भली आहे, जेका आहे कम्युनिकेशन। हू क्लाइंट सां वेल कम्युनिकेट करे ऐं जेका लॉ जा टास्क वठंदा आहिनि ऐं उनखे आउटसोर्सिंग कंदा आहिनि। आउटसोर्सिंग मां मुराद इहा आहे त तव्हां हिकु 10,000 जो कमु वरितो आहे ऐं उहो कंहिं ॿिए बंदे खां जेको ॿियो जेको स्किल जो माहिर आहे उन खां 3,000 रुपए में या 5,000 रुपए में तव्हां कमु करायो ऐं उनखे तव्हां क्लाइंट खे वरी सबमिट करे छॾियो। ऐं ईअं कंक्लूड कंदुसि त फ्रीलांसिंग लाइ स्किल लाज़मी आहे। त अहिड़े हिसाब सां आफ्ताब फाइवर लाइ को मखसूस कोर्स लाज़मी न आहे। फाइवर हिकु बेसिक प्लेटफॉर्म आहे। बाक़ी तव्हां स्किल लाइ कोर्स कयो ऐं स्किल ठाहियो पंहिंजी, ऐं जेकॾहिं शुरू में तव्हां चाहियो था त स्किल में टाइम लॻंदो त तव्हां पंहिंजी आउटसोर्सिंग कयो, तेसि ताईं तव्हां पंहिंजी स्किल बि डेवलप करे वठो। बिल्कुलु तौकीर, एब्सोल्युटली तव्हां जेको आहे सही ॻाल्हि कई आहे त जेकॾहिं तव्हां वटि को स्किल कोन्हे तव्हां कोशिशि कयो उहो स्किल सिखो। बाक़ी फाइवर जे लाइ जीअं तौकीर ॿुधायो त को कोर्स कोन्हे, यानी फाइवर यूज़ कबो कीअं आहे उनजे लाइ को कोर्स कोन्हे। अच्छा तौकीर, हैरत जी ॻाल्हि आहे त असांखे जेको आहे यंग जेके मैट्रिक ऐं फर्स्ट ईयर इंटर वारा छोकिरा आहिनि उहे बि हींअर जेको आहे पंहिंजे आसपास जे इलाइक़नि में ॿुधनि पिया। त हिकिड़ो मैसेज असां वटि आयो आहे ऐं नालो हिननि अदनान ॿुधायो आहे। ॿुधाइनि पिया त मां मैट्रिक क्लास में आहियां ऐं कोटड़ी खां ॿुधी रहिया आहिनि। त हुननि सवाल कयो आहे त फाइवर तां जेको आहे मैक्सिमम मंथली केतिरो अर्न करे थो सघे ऐं छा फाइवर ते कमु करण सां असांजी स्टडीज़ ते फ़र्क़ु जेको आहे पए सघे थो या न? त तौकीर इन जे बारे में तव्हां छा था चओ? जी अदनान, फाइवर तां अर्निंग जी का बि लिमिट न आहे। तव्हां $7 खां $1,000 ताईं अर्न करे सघो था। ऐं रही ॻाल्हि फ्रीलांसिंग ऐं पढ़ाई जी, त मोस्टली इहो एतिरो अफेक्ट नथो करे। जेकॾहिं अव्हां पंहिंजो शेड्यूल ठाहे सघो था त तव्हांखे ही कॾहिं बि अफेक्ट न कंदो। ऐं मुंहिंजा केतिरा ई क्लासमेट्स फ्रीलांसिंग कनि पिया त मूं कॾहिं बि इहो फील न आहे कयो त फ्रीलांसिंग मुंहिंजी पढ़ाई ते को असरु विझे पई। बिल्कुलु तौकीर, ऑफकोर्स इहो इंसान ते पाण ते डिपेंड थो करे न त शयुनि खे कीअं थो मैनेज करे। जेकॾहिं तव्हां पढ़ाई सां गॾु मल्टीटास्किंग करे था सघो ऐं ॿियनि शयुनि खे जेको इक्वली पंहिंजे पढ़ाई सां गॾु जेकॾहिं उन्हनि खे कंटिन्यू करे था सघो त मुंहिंजे ख़्याल सां पोइ पढ़ाई ते को बि इफेक्ट न पवंदो। अच्छा तौकीर, ॿियो सवाल जेको आहे मुंहिंजे ख़्याल सां इन सवाल ते पाण ॻाल्हाया आहियूं। ॿियो सवाल ही जेको कनि पिया बशीर जेको आहे असांखां जामशोरो सोसाइटी मां इहो सवाल कनि पिया। उहो पुछनि पिया त छा बग़ैर कंहिं स्किल जे फाइवर ते कमु करे सघिजे थो? त मुंहिंजे ख़्याल सां इन ते तौकीर जेको आहे हिन जो जवाबु ऑलरेडी ॾेई चुको आहे। जेकॾहिं तव्हां ट्रांसमिशन खे हींअर जॉइन कई आहे तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त स्किल त जेको आहे लाज़मी आहे फाइवर ते कमु करण जे लाइ, छाकाणि त उते तव्हांखे सर्विस प्रोवाइड करणी आहे न। सर्विस जे लाइ त लाज़मी आहे न वटि का स्किल हुजे, पर जेसिताईं तव्हां पंहिंजी स्किल जेको आहे उते बिल्ड कयो, पंहिंजी स्किल ठाहियो, स्किल सिखो, तेसिताईं जेको आहे जीअं तौकीर जेको आउटसोर्सिंग जो आइडिया ॾेई आहे तव्हां आउटसोर्सिंग करे था सघो। यानी तव्हां कंहिं बि गिग लॻायो, उन सां रिलेटेड जेकॾहिं तव्हांखे कमु मिले थो तव्हां कंहिं ॿिए माण्हू खां जेको आहे उहो उन साॻे अमाउंट में थोरो घणो कमीशन पंहिंजे लाइ रखी करे उहो ॿिए कंहिं खां कमु कराए पंहिंजे क्लाइंट खे पोइ वरी उहो पंहिंजे क्लाइंट खे ॾेई था सघो। त ईअं जेको आहे करे था सघो।
अच्छा तोकीर असांजो जेको प्रोग्राम आहे उहो बि हिन वक़्तु जेको आहे पंहिंजे इख़्तिताम तरफ़ वधे पियो। बहरहाल असां वटि मैसेजिस बि खोड़ सारा आयल आहिनि त लिसनर्स खे हिकु दफ़ो ॿीहर जेको आहे ॿुधाईंदो हलां त जेकॾहिं अव्हां जेको पैगाम असां शामिलु नथा करे सघूं त उन जे लाइ माज़रत। असां कोशिशि कंदासीं त नेक्स्ट जेके असांजा एपिसोड्स आहिनि उन्हनि में अव्हांजा सवाल जेको आहे शामिलु करे वठूं। अच्छा तोकीर हिकिड़ो ॿियो सवाल असां वटि जेको आहे सिंध यूनिवर्सिटी जो स्टूडेंट आहे जंहिंजो नालो आहे ज़ुबैर, उन्हनि पुछियो आहे त ब्लॉगिंग छा हूंदो आहे ऐं इन ब्लॉगिंग जे थ्रू जेको आहे असां कीअं अर्न करे था सघूं। अच्छा ज़ुबैर तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त ब्लॉगिंग जेको आहे ब्लॉगिंग ईअं हूंदो आहे तव्हां का शइ लिखंदा आहियो ऐं उनखे इंटरनेट ते अव्हांजो वेबसाइट हूंदो आहे, अव्हांजो ब्लॉग ठहियलु हूंदो आहे, उते पोस्ट कंदा आहियो, पोइ उनखे उते माण्हू पढ़ंदा आहिनि उन ब्लॉग खे, उन ते व्यूज़ ईंदा आहिनि, पोइ उन जे करे जेको आहे अव्हांखे अर्निंग थींदी आहे ऐं इहो अर्निंग जेको आहे पोइ वरी अव्हांखे गूगल वारा सेंड कंदा आहिनि। त मां बि रिसेंटली जेको आहे पंहिंजो ब्लॉग ठाहियो हो, हुनखे तक़रीबन हिन वक़्तु 3 महीना थी चुका आहिनि ऐं मुंहिंजे ख़्याल सां हींअर मां हुनजी पेमेंट कढाई कोन्हे, पर उहा जेको आहे हुन ब्लॉग तां तक़रीबन मूंखे $200+ जेको आहे हींअर ताईं अर्निंग थी चुकी आहे। त इहो आहे ब्लॉगिंग ऐं इहो अव्हां बसि जस्ट पंहिंजो हिकिड़ो ब्लॉग ठाहियो ऐं उहो कीअं ठाहिबो आहे इन जे लाइ वटि जेको आहे यूट्यूब पियल आहे, यूट्यूब ते वञी करे अव्हां सर्च कयो, ट्यूटोरियल्स खोड़ सारा मिली वेंदा, उहे ॾिसी करे अव्हां जेको आहे पंहिंजो ब्लॉग ठाहियो ऐं उन ते बसि तव्हां जेको आहे पंहिंजा राइटअप्स विझंदा वञो ऐं उहो मोनिटाइज़ थींदो, उनखां पोइ अव्हांखे जेको आहे उन तां अर्निंग थियणु शुरू थींदी। अच्छा तोकीर प्रोग्राम खे जेको एंड करण खां पहिरीं अव्हां खां मां हिकिड़ो सवाल जेको आहे जेको मुंहिंजे पंहिंजे ज़हन में अचे पियो ऐं यकीनन असांजा जेके लिसनर्स आहिनि उन्हनि जे बि ज़हन में इहो सवाल जेको आहे ईंदो हूंदो। त तोकीर पाण ॾिसूं था त जेको जी फाइवर या जेके प्लेटफॉर्म्स आहिनि इहे सभई माना इंटरनेशनली जेको आहे यूज़ पिया थियनि, त तोकीर छा इंटरनेशनल मार्केट सां कॉम्पीट करणु सवलो आहे? ऐं जीअं त खोड़ सारा अहिड़ा माण्हू हूंदा आहिनि जेके सेल्फ कॉन्फिडेंस जे घटिताई जे करे, कमी जे करे जेको आहे उहो सोचींदा आहिनि त असां जेको आहे कॉम्पीट नथा करे सघूं ऐं उन ख़ौफ़ जे करे पोइ उहे वरी अहिड़ा जेके आहिनि प्लेटफॉर्म्स जॉइन बि न आहिनि कंदा। त तोकीर अव्हां वटि कहिड़ा टिप्स आहिनि जंहिं ते अमल करे जेकॾहिं को नओं माण्हू आहे जेको इंटरनेशनल मार्केट में पंहिंजो क़दम थो रखे त हुते पंहिंजो नालो कीअं थो ठाहे सघे या इंटरनेशनल मार्केट सां कॉम्पीट कीअं थो करे सघे फाइवर जहिड़नि प्लेटफॉर्म्स ते? ऐं गॾोगॾु जेको आहे तोकीर जीअं त पाण ॾिसूं पिया न फाइवर जहिड़ा ॿिया बि प्लेटफॉर्म्स यकीनन असां वटि हूंदा, कुझु नाला मां बि ॿुधा आहिनि जीअं अपवर्क आहे, त अहिड़ा कहिड़ा प्लेटफॉर्म्स आहिनि फाइवर जहिड़ा तोकीर जंहिं ते बि कमु करे सघिजे थो, जंहिंजो माना मेथड जेको आहे तक़रीबन फाइवर जहिड़ो हुजे या प्रोसेस सेम हुजे? जी जाज़ेब, इहो तव्हां हिकु सुठो सवाल कयो आहे। हर लिसनर जे ज़हन में हूंदो त छा असीं एतिरा अहल थींदासीं जेको इंटरनेशनली क्लाइंट खे सेटिस्फाई करे सघंदासीं, त छा असां उनखां इहो प्रोजेक्ट वठी सघंदासीं या न। त उनजो मिसाल आउं तव्हांखे हिकु ईअं ॾींदुसि त हिकु जेको जंहिं कंट्री में रहूं पिया उहो पाकिस्तान जेकी आहे फ्रीलांसिंग मार्केट में टॉप 3 मुल्कनि में अचे थी, मतिलबु 3rd नंबर ते माना जेको वॾे में वॾी सर्विस प्रोवाइडर पाकिस्तान आहे। त इन जे करे फ्रीलांसिंग मार्केट्स जेके आहिनि उन में पाकिस्तान जेका इमेज आहे उहा माशाअल्लाह सां हिकु ज़बरदस्त इमेज ठहियलु आहे। तंहिं करे जेको बि क्लाइंट हूंदो आहे हुनखे हिकु एतबार हूंदो आहे त हीअ जेके पाकिस्तानी आहिनि हीअ कमु सुठो कंदा आहिनि। त हिकु त पंहिंजो जेको इंटरनेशनली जेको पंहिंजो कॉम्पिटिशन हो उहो उते ई घटिजी थो वञे। हाणे रही ॻाल्हि तव्हांजी कॉम्पिटिशन कंहिं में विच में रहे थो, हाणे तव्हांजो कॉम्पिटिशन रहे थो जे पाकिस्तानी जेके ॿिया फ्रीलांसर्स आहिनि उन्हनि जे विच में, ऐं इन कॉम्पिटिशन खे तव्हां आसानी सां मुंहुं ॾेई सघो था। उहो कीअं? तव्हां सिर्फ़ु हिकु स्किल खणो ऐं उन महारत हासिलु कयो। हर शइ जी हिकु वर्थ हूंदी आहे, जेकॾहिं तव्हां उन स्किल में माहिर आहियो त तव्हांखे हीअ कॉम्पिटिशन कुझु बि नथो करे सघे। हिन कॉम्पिटिशन जे हूंदे बि तव्हां सुठी अर्निंग करे सघो था। असां जॾहिं शुरू कयो हो त असां पाण ईअं ई शुरू में घबरायासीं पिए त छा असीं कॉम्पीट करे सघंदासीं, छा असांखे प्रोजेक्ट अवार्ड थींदा, छा असीं एतिरा अहल आहियूं जेको इंटरनेशनली कमु करे सघूं था। ऐं बिल्कुलु असीं अहल हुआसीं, असांखे अवार्ड मिलनि पिया ऐं असीं कमु करे रहिया आहियूं। ऐं उन सां गॾोगॾु अव्हां इंटरनेशनल जेको कॉम्पिटिशन आहे उहो तव्हां चेक ख़ुदि बि करे सघो था। तव्हां एज़ अ ख़ुदि बायर थियो, तव्हांखे जस्ट छा कयो, तव्हां हिकु दफ़ा फाइवर जो ऐप इंस्टॉल कयो ऐं उन ते रुगो एज़ अ बायर वञी सर्च कयो, जेका सर्विस अव्हां प्रोवाइड कंदो उहा सर्विस सर्च कयो त ॾिसो जेके इंटरनेशनल क्लाइंट्स आहिनि उहे छा प्रोवाइड करे रहिया आहिनि ऐं अव्हीं छा प्रोवाइड कंदो। डिफरेंस चेक कयो ऐं उहे जेके तव्हां में खामियूं आहिनि उहे दूरि कयो, हुते जेके प्लस पॉइंट्स आहिनि उहे तव्हां एड कयो। ऐं इहो प्रोसीजर फॉलो करण खां पोइ अव्हांजी जेका गिग आहे, जेका हुनजी वर्थ आहे उहा वधी वेंदी ऐं इनशाला अव्हांखे ऑर्डर अचणु शुरू थींदा हलिया। ऐं जाने अव्हां जेको ॿियो सवाल कयो त फाइवर खां अलावा ॿिया कहिड़ा कहिड़ा प्लेटफॉर्म आहिनि जिते पाण पाकिस्तानी जेके पंहिंजो सर्विसिस प्रोवाइड करे सघनि था। त जी जाज़ेब, मुख़्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स आहिनि जिते पंहिंजे पाकिस्तानी सर्विसिस प्रोवाइड करे सघनि था ऐं उहे प्लेटफॉर्म तक़रीबन रिज़ेम्बलेंस रखनि था फाइवर सां। ऐं तव्हांखे मिसाल ॾींदुसि हिकु पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म जो जेको रिसेंटली कुझु महीना अॻु में लॉन्च थियो आहे ऐं उन ते इंटरनेशनल क्लाइंट्स बि अचणु शुरू थी विया आहिनि, जेको आहे वर्क चेस्ट, जंहिंजो ओनर आहिनि सर हिशाम सरवर साहब, जेके मुंहिंजा पाण जा मेंटोर आहिनि, जंहिं असांखे फ्रीलांसिंग सेखारी आहे। ऐं उनखां अलावा अपवर्क बि आहे।
अपवर्क ते तव्हां कमु करे सघो था। ऐं अव्हांखे सजेस्ट ईअं कंदुसि त तव्हां स्टार्टिंग में सिर्फ़ु फाइवर ते कमु कयो, स्टार्टिंग में फाइवर ते कमु कयो, ऐं जॾहिं स्किल में तव्हां बिल्कुलु माहिर थी था वञो त तव्हां अपवर्क ते अची वञो। अपवर्क ते तव्हांजी अर्निंग बि वधीक आहे, अपवर्क ते तव्हांजो क्लाइंट तव्हांखे जेके परमनेंटली क्लाइंट आहिनि उहे मिलंदा। जी जां साहिब। बिल्कुलु तौकीर इहो जेको आहे हिकिड़ो कॉम्प्रीहेंसिव इन ते बाक़ाइदे गुफ़्तगू कई आहे। अच्छा तौकीर, जी त पंहिंजो हींअर प्रोग्राम इख़्तिताम तरफ़ हले पियो, त लास्ट में जेको आहे असांजी ऑडियंस खे कहिड़ो पैगाम ॾियणु चाहींदा? जी जां साहिब, आउं पंहिंजे लिसनर्स खे इहा सलाह ॾियणु या इहो पैगाम ॾियणु चाहींदुसि त तव्हांखे हिकु दफ़ा इहो फ्रीलांसिंग जी तरफ़ अचिणो पवंदो, हिकु तव्हांखे क़दम खणणो पवंदो। ऐं जेकॾहिं तव्हां क़दम खणो था फ्रीलांसिंग जी दुनिया में इन थींदव, फ्रीलांसिंग जी फील्ड तव्हांखे एॾी त वणंदी जो तव्हां उनखे कॾहिं छॾण जो सोचींदा बि न। गॉड हेल्प दोज़ हू हेल्प देमसेल्व्स। अलाह साईं उन जी मदद करे थो जेके पंहिंजी मदद पाण कनि था। पंहिंजी मदद पाण मां मुराद इहा आहे त तव्हां स्टार्ट कयो, पहिरियों क़दम खणंदव तॾहिं ई तव्हां कामयाबु थींदव। तव्हांजो तव्हां सोचंदा हूंदव त मुंहिंजो पहिरियों क़दम छा हुजणु खपे। तव्हांजो पहिरियों क़दम इहो आहे त तव्हां अॼु ई हींअर ई फाइवर एप्लीकेशन प्ले स्टोर तां डाउनलोड कयो ऐं उनखे तव्हां स्क्रोल करे ॾिसो त फ्रीलांसिंग आहे छा, ऐं इनशाला तव्हांखे काफ़ी शयूं उतां सिखण में मिलंदियूं। ऐं उनखां अलावा तव्हांखे रिकमेंड कंदुसि त सर हिशाम सरवर जो यूट्यूब ते हिकु चैनल आहे, उहो खोड़ सारी शयूं उते सेखारींदो आहे। सर काफ़ी स्किल्स उते सेखारियूं आहिनि, कम्युनिकेशन सेखारी आहे, कीअं गिग्स ठाहिजनि, कीअं फाइवर जे अकाउंट खे रन कजे, पेमेंट मेथड छा आहिनि, छा करणु खपे, छा न करणु खपे, छा रूल्स आहिनि, छा फ्रीलांसिंग जा फ़ाइदा कहिड़ा आहिनि, नुक़सान छा आहे, कहिड़ियूं स्किल्स आहिनि, हर शइ जीअं फ्रीलांसिंग जो चवनि A to Z जेको सॼो सर हिशाम सर्वर जे चैनल ते मौजूदु आहे। तव्हां जस्ट यूट्यूब ते वञो, सर्च करियो सर हिशाम सर्वर, ऐं तव्हांखे हुते सभु मालूमात मिलंदी। ऐं इहो ई हो मुंहिंजो पैगाम असांजे जेके लिसनर्स लाइ। ऐं थैंक यू जावेद। बिल्कुलु तौकीर, असां वटि जीअं त अॼुकल्ह यूट्यूब ते हर शइ पई आहे, त जंहिंखे को बि कंफ्यूजन स्टिल आहे या उहे माण्हू जंहिंजा असां सवाल शामिलु न करे सघिया आहियूं, त वॾी माज़रत उन्हनि जे लाइ। अवां जेको आहे यूट्यूब ते पंहिंजा क्वेरी सर्च करे था सघो, या असां नेक्स्ट प्रोग्राम में जेकॾहिं अवां चवंदव असांखे जेकॾहिं फीडबैक में असांखे ॿुधाईंदव त असां नेक्स्ट ॿिनि ते प्रोग्राम ॿिया बि कंडक्ट कयूं, त असां यकीनन जेको आहे ॿिया बि पंहिंजा सेशन्स रखंदासीं, ॿिया बि हिननि ते प्रोग्राम कंदासीं, उन्हनि में अव्हांजा सवाल बि जेको आहे शामिलु कंदा हलंदासीं। ऐं गॾोगॾु जेकॾहिं अव्हांजो को बि क्वेरी आहे ऐं मेरान यूनिवर्सिटी जा शागिर्द आहियो, त बिल्कुलु तौकीर सां जेको आहे अव्हां कॉन्टेक्ट करे था सघो। सिविल डिपार्टमेंट में तौकीर मौजूदु हूंदा आहिनि। सो डियर लिसनर्स, अॼु जी मौजूदु असां खोड़ सारो गुफ़्तगू जेको आहे असां करे आया आहियूं। असां जेको आहे डिस्कस कयो त फाइवर छा हूंदी आहे, उन ते जेको आहे कमु कीअं कजे, कहिड़ा कहिड़ा स्किल्स आहिनि उहे उते जेको आहे जिन ते कमु करे थो सघिजे, जिन में असां जेको आहे कमु करे अर्निंग करे था सघूं, कहिड़ा कहिड़ा सर्विसिस आहिनि ऐं पेमेंट मेथड्स छा आहिनि, इहे सभु शयूं जेको आहे असां डिस्कस करे आया आहियूं। त तौकीर जी वॾी महिरबानी जो तव्हां असांखे टाइम ॾिनो, असांजी ऑडियंस जे लाइ टाइम कढियो। इनशाला कोशिशि कंदासीं त जेके आहिनि अहिड़ा ॿिया बि प्रोग्राम जेको आहे खणी अचूं, अहिड़ा ॿिया बि टॉपिक्स जेको आहे असां पंहिंजे प्रोग्राम्स में इंक्लूड कयूं। ऐं यकीनन पॉसिबल आहे तौकीर खे तव्हांखे जेको आहे हिकु दफ़ा असां ॿीहर बि हिते जेको आहे तकलीफ़ ॾियूं हिते अचण जी। जेको आहे इख़्तिताम तरफ़ हींअर बिल्कुलु असां वधूं पिया, ऐं पंहिंजे रवाज मुताबिक़ वेंदे वेंदे मां हर दफ़ा अव्हांखे जेको आहे को बुक रिकमेंड कंदो आहियां। त हिन दफ़े जेको बुक मां सोचियो अव्हांखे रिकमेंड करण जे लाइ, उहो आहे अल्केमिस्ट, जंहिंजा ऑथर आहिनि पाउलो कोएलो। हिकु नाविल आहे ऐं ॾाढो बहितरीनु नाविल आहे, सेल्फ स्ट्रगल ते आहे, त अव्हांखे ॾाढो मज़ो ईंदो इनखे पढ़ण में। यकीनन इहो पढ़िजो। अच्छा, हुन सां गॾोगॾु अव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त अव्हां जेको आहे असांखे पंहिंजो फीडबैक ॾियणु न विसारींदा। असांखे फीडबैक ॾियण जे लाइ अव्हां SMS करे था सघो, टाइप कयो म्यूट FM MUTE FM स्पेस पंहिंजो नालो ऐं पैगाम ऐं सेंड कयो 4471 ते। साॻे ई वक़्त ते अव्हां फेसबुक ते बि असांखे जॉइन करे था सघो। फेसबुक ते जॉइन करण जे लाइ अव्हां लॉगिन कयो www.facebook.com/mute.fm MUET.FM ते। उते जेको आहे पंहिंजो फीडबैक सजेशन या अहिड़ा टॉपिक्स जिते असां प्रोग्राम कयूं उहे अव्हां रिकमेंड कयो था, त उहे तव्हां असांखे जेको आहे हुते अनबॉक्स करे था सघो। सामिन जे हिन प्रोग्राम में फ़िलवक़्तु एतिरो ई। पंहिंजे होस्ट आर जे जहांज़ेब खे ॾींदा इजाज़त। वरी ॿीहर स्टूडियो 92.6 विद आर जे जहांज़ेब जे कंहिं ॿिए एपिसोड में मुलाक़ात थींदी। आख़िर में इन ई दुआ सां मोकिलाईंदासीं त जिते बि हुजो शल अलाह साईं जे छपर जे छांव में टहकंदा टहकंदा मुरकंदा हुजो। ॾुख ऐं ग़म अव्हां खां कोहे दूर ऐं ख़ुशियूं हमेशह अव्हां जे दर ते दस्तक ॾींदा हुजनि। विल बी बैक विद अनदर एपिसोड। तेसि ताईं ॿुधंदा रहो म्यूट FM 92.6 द वॉइस ऑफ माय यूनिवर्सिटी।
पखी मारे न पार जा पखी मारे न पार जा ही बोलिन बोलड़ू ही बोलिन बोलड़ू अल्लाह बोलड़ू सुरदियों पखी मारे न पार जा 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 अल्लाह 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 पखी मारे न पार जा 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 अल्लाह अल्लाह पखी मारे न पार जा 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 ही बोलिन बोलड़ू ही बोलिन बोलड़ू अल्लाह बोलड़ू पखी मारे न पार जा 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 अल्लाह अल्लाह
This is Mute FM 92.6. Campus FM Radio by Mehran University, Jamshoro. वफाकी इंश्योरेंस मोहतसब हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ऐसे तमाम अफराद इदारों को मुत्तला किया जाता है जो इंश्योरेंस क्लेम के हुसूल के लिए परेशान हैं। वफाकी इंश्योरेंस मोहतसब हुकूमत पाकिस्तान से रुजू करें या वेबसाइट www.fio.gov.pk पर इरसाल करें या जाती तौर पर रुजू करें। आवाज की दुनिया में एक नया नाम Mute FM 92.6 Educational Radio. कुछ जालसाज आपको फ्री सिम कार्ड, मुफ्त फोन कनेक्शन या राशन का लालच देकर आपके फिंगरप्रिंट हासिल कर सकते हैं। ये कीमती डेटा गैर कानूनी सरगर्मियों में इस्तेमाल किया जा सकता है, लिहाजा फिंगरप्रिंट देते हुए मोहतात रहें। अपने शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड सिमों की तादाद जानने के लिए शनाख्ती कार्ड नंबर 668 पर SMS करें या www.cnic.sims.pk पर चेक करें। You are listening to Mute FM 92.6 Educational Radio. Stay tuned. This list is slightly different from a list of greatest engineers of all time. Engineering is mainly dealt with applied sciences, and while building something useful out of an abstract theory is a prize on its own, usually the Nobel Prize is traditionally awarded for the advancement of knowledge and breakthrough in the understanding of mankind. What's really controversial, though, is the engineer's rightful claim to the prize. If you were to go through the will of Sir Alfred Nobel himself, it goes something like this. The interest is to be divided into 5 equal parts and distributed as follows. 1 part to the person who made the most important discovery or invention in the field of physics. 1 part to the person who made the most important chemical discovery or improvement. 1 part to the person who made the most important discovery within the domain of physiology or medicine. 1 part to the person who, in the field of literature, produced the most outstanding work in an idealistic direction. And 1 part to the person who has done the most or best to advance fellowship among nations, the abolition or reduction of standing armies, and the establishment and promotion of peace congresses. As you can see, it says, for the prize should be awarded to anyone who makes the biggest discovery or invention of the preceding year. The word invention being the key word here. Nonetheless, as past trends suggest, Nobel Prize has established itself only for radical discoveries. And so here is the list of top 10 engineers of all time who came up with radical discoveries worthy of a Nobel Prize. Number 10, Frank Whittle. Nobel Prize in Physics for the discovery of heated supersonic flow expansion in a rarefied fluid flow. The inventor of the turbojet engine. His biggest radical moment of brilliance was discovering how a supersonic flow from the combustion chamber can be made to do work in the most efficient way possible. This was important because the physics of supersonic flow was not at all developed at its time. Literally, no one had much ideas about the trade-offs between shockwave losses and high-speed jet ejections, especially in case of an afterburner. You have a lot to thank this guy for. Without him, we'd go back to the slow days, where the war was won or lost based on naval and land dominance. Number 9, Nicholas August Otto. Nobel Prize in Physics for rapid heating and stabilization of compressed polytropic fluids. If you fall anywhere between a high school student and the end of your life, you know the Otto cycle, the 4-stroke engine cycle, the engine that changed the automation industry. You can draw the diagram with your eyes closed. So you must be wondering, what's so radical about that? Well, this guy actually found a way to stabilize the explosive power of the charge ignition. At a time when flame stabilization was not even a research topic, he managed to sustain it for thousands of cycles. The key insight being compressed polytropic fluid in exchanging adiabatic and isothermal boundaries. If I were to seat you down and ask you to derive an expression for sustaining the explosive power trapped within fuel, you might start with famous relativistic energy equation or the age-old laws of thermodynamics under open volume integral. But you wouldn't be going much further than that.
This was a monumental discovery. And if you own a car or a bike, or just love speed and hate being behind a dude driving at 10 miles per hour, you have everything to thank this guy for. Number 8, James Watt, Nobel Prize in Physics for the discovery of extraction of low-grade energy. When you are the SI unit of power, there's a hard reason to deny you a Nobel Prize in the first place. However, the most intellectual part of his idea to use a condenser instead of the previously used cooling cycles was his ability to understand that low-grade energy can be retracted into useful work. The existing notion at the time was that since entropy of an isolated system has to always increase once energy is lost as heat, as entropy, there's no way getting it back. People tried to minimize the production of heat instead. What Watt did was show a way to bend the laws of thermodynamics just a little, enough to blur the lines between isolated and constrained system, where you could exchange entropy for work. Rest is truly history. Number 7, Alan Turing, Nobel Prize in Peace, for shortening the Second World War by at least 2 years and saving lives of at least 2 million fellow citizens, with a bonus of saving the crippling world economy. Okay, hear me out. Until Nobel Prize for Mathematics is being announced, Turing's biggest claim to the prize is through his heroics in the Second World War. The moment of brilliance we're referring to is his trailblazing papers on probabilistic cryptography and statistics of repetitions. You know a work is important when it's kept confidential for 70 years and are finally unclassified in 2012 under community pressure. Guys like these are world heroes and should be celebrated like one. Seriously, we should stop being a hypocrite and stop patronizing someone after they're dead, all the while treating them like shit. Number 6, Nikola Tesla, Nobel Prize in Physics for efficient electric field propagation. If your picture of sitting inside a room full of electricity zapping everywhere is a household picture seen by almost everyone alive, you know your Nobel Prize is on its way to your mail post and will be arriving any day now. Be it alternating current or wireless transmission, the revolution this man had brought to the entire electrical industry is unprecedented. You cannot exaggerate the importance of this man in the modern world. His insight about reduced heat losses over long-distance high-voltage transmission when using an alternating current, or his insight regarding the wireless transmission of power without domain superposition, this guy brought it all. Even his Tesla coil was a game-changer on its own. Bottom line, in every way possible, this man deserves his Nobel Prize. Number 5, Archimedes, Nobel Prize in Physics for his contributions to the foundation of hydrostatics. Kings from the ages gone generally used to be mental, bar a few maybe. They would order you to do something, and if you fail, boom, your head's gone. Our good friend Archimedes was in a similarly tight position, but for the betterment of us in the world, he saved his head. We all know the Archimedes principle, but what we don't comprehend is how truly profound the discovery was. Without Archimedes, we wouldn't be able to differentiate between a wood that floats and a rock that sinks. Expanding it into molecular physics back in 200 BC, his ability to comprehend the dynamic equilibrium between mean oscillatory particles and differential population rise was unprecedented. One of my favorite phrases is, "Whatever floats your boat," and for that I have everything to thank Archimedes for. As for you, well, if you've ever been on a boat, a ship, or generally in your neighbor's swimming pool, it's because of this guy that you knew in your heart that you could do it, because buoyancy got your back. Number 4, Leonardo da Vinci, Nobel Prize in Physics for contribution to the foundation of structural mechanics. We all know who he is. We all were secretly waiting to find him in the list, but deep down, we all kept wondering as to what would be listed as his radical breakthrough. The answer is his key insight into the relation between force and torque.
From his flying machines to his catapults, the one thing that was most striking was his ability to understand how we can vary force and torque and interchange between them. Structural mechanics existed before Da Vinci, but no one ever correlated the force and the torque quite as Da Vinci did. Even though rudimentary, his understanding of gear ratios, torque multiplications, and moment arms centuries before force and torque was even defined is what makes his insight so spectacular. While he still remains undisputed king amongst the artist folks, his pioneering breakthroughs would have surely and rightfully earned him a Nobel Prize as well. Number 3, Richard T. Whitcomb, Nobel Prize in Physics for the formulation of the behavior and profile of supersonic perturbed flow. It's nothing short of a travesty that no one outside the field of aerospace knows the name of this genius, and I would rather go as far as to tell this guy contributed more to physics and to the world in general than most other Nobel laureates combined. His magnum opus was the discovery of Whitcomb area rule and the supercritical aerofoil. In brief, he not only revolutionized, but founded an entire modern understanding of high-speed flows. Whenever you move through a field, you experience resistance. As your speed goes up and up, a plethora of new parameters come into play, and things behave in complete pandemonium. Nothing happens like we think they will, and this guy is the reason we now understand most of it. From drag profiles and Mach planes to pre-compression blade profiles or cusp trailing edges, this guy is behind all that. Okay, I might be exaggerating a tiny bit, but honest to God, without him, there would not be any supersonic jets or even transonic jets whatsoever. Want to get from Sydney to Los Angeles? Without him, that would be 19 hours instead of 15. And thrice the price, please. What, your country's being invaded? Do you need immediate air support? Oh, I'm sorry, but your planes are 5 times slower now. You have a better chance calling your nearest Navy. Number 2, Leonard Euler, Nobel Prize in Physics for the contribution to heuristic information interpretation. Ah, Euler, you crazy, crazy guy. Even if the last science or mathematics class that you took was back in high school, you would still immediately recognize this stupendously brilliant and crazy dude that spared no field with his voluminous contributions. Be it calculus, algebra, topology, fluid mechanics, thermodynamics, structural mechanics, you name it, and he's done it. For the readers thinking which moment to choose, I'm honestly lost for words, and anything you choose will be enough. I personally chose his contributions to complex analysis. I feel that had the most profound effect of the entire scientific community. Be it communication, surveillance, astrology, or signal conversion, anything that had to do with his complex analysis, like Fourier transformation, it would not work without the foundations from Euler. And for that, he deserves a special edition of the Nobel Prize, and not just the normal one. Oh, and on a side note, he also came up with the fundamental symbol of any function, fx, and is also honored with the single most important constant alongside pi, E being named after him. So there's that. And finally, number 1, Michael Faraday, Nobel Prize in Physics for the unification of electromagnetism. He was the definition of engineer, but more importantly, his findings transcended every other scientist of his generation by a mile. People till then thought of electricity and magnetism as 2 separate things. Can you believe it? He had such a profound impact that 2 separate words, electricity and magnetism, became one. Now, that's some serious impact right there. Although he lacked mathematical rigor, his ability to deduct that they are but the same thing and his rightful prediction about the nature of potential field lines and the theory behind electromagnetic induction cannot be refuted whatsoever. Just like Higgs, who had to wait for his prediction of bosons to be confirmed before being awarded the Nobel Prize, Faraday just had to wait till Maxwell, who was inspired by Faraday's work itself, finally came forth with his set of equations for electromagnetism, 3 of which already existed in a slightly different form. Faraday's claim to Nobel fame cannot be argued whatsoever. End of sentence. That's all for today.
Mehran University of Engineering and Technology aims to equip students of undergraduate, postgraduate, and doctoral studies with advanced knowledge through collaborative opportunities emerged from linkages with academia, industry, and government. You are tuned to Mehran University Campus Radio FM 92.6. Excellence and innovation built into every broadcast. Department of Chemical Engineering. Chemical engineering at Mehran University of Engineering and Technology, Jamshoro, is a discipline including various areas of technology. In comprehensive terms, chemical engineers think and design process to produce, transform, and transport materials, beginning with experimentation in the laboratory, followed by the execution of the technology in full-scale production. We are imparting international standard education to our undergraduate and postgraduate students in the field of chemical engineering. The department has well-established core laboratories for fluid mechanics, mass transfer, separation process besides seminar library, computer laboratory, water research quality, and analytical research laboratories. Industrial training and study tours are also arranged regularly for field inspection and hands-on training in the projects of national importance. These students are encouraged to work independently and are assigned projects involving design and other aspects of chemical engineering. At the Department of Chemical Engineering, you can pursue a degree program that combines the content in engineering and natural sciences to prepare you for your career as a chemical engineer. This is Mute FM 92.6, educational radio. Stay tuned. I'm Shanila Ali. आवाज़ जी लहरुनि वसीले जिते जिते मुंहिंजो आवाज़ पहुची रहियो आहे अमां समूरनि सामईन खे मुंहिंजो खुलूस ऐं मोहबत भरियो सलाम। अॼुकल्ह हिन कॉम्पिटिशन जे दौर में अॻभरो थियण लाइ तालीम हासिल करणु लाज़िम आहे। हिन दौर में इल्म ताईं रसाई पिणु आसान थी चुकी आहे। बसि उन लाइ जुस्तजू ऐं दिलचस्पी हुजणु खपे। जेकर अवां वटि वसीला मौजूदु आहिनि त ज़रूरु ॿियनि सां वंडींदा रहो ऐं ॿुधंदा रहो। इल्म ऐं ॼाण जी खाण महरान FM 92.6 जामशोरो। You are tuned into Mute FM 92.6, educational radio by Mehran University, Jamshoro. And all-time favorites. वक्फा रखा कुदरत ने दो बहारों के बीच, बोएंगे सोच समझ के हम भी मुस्तकबिल के ये बीज। बढ़ती आबादी में ये बच्चे कहीं भीड़ का हिस्सा ना बन जाएं। बढ़ती आबादी में ये बच्चे कहीं भीड़ का हिस्सा ना बन जाएं। कोई अनसुना किस्सा ना बन जाए। तो आओ उठाए नया कदम, नया कदम। 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 माँ और बच्चे की सेहत को यकीनी बनाने के लिए बच्चे की पैदाइश के वक्त या फौरन बाद कम से कम 2 साल के लिए वक्फे का मुनासिब तरीका अपनाएं। ये पैगाम अवामी मफाद में वजारत कौमी सेहत, हुकूमत पाकिस्तान और पाथफाइंडर इंटरनेशनल की जानिब से पहुंचाया गया है। You are listening Mute FM 92.6, educational radio. Stay tuned. 2001 में पाकिस्तान को पॉपी फ्री कंट्री का एजाज़ बख्शा गया, जो कि यूनाइटेड नेशन की तरफ से था। अब ये हम पर मुनसर है कि हम अपने माशरे की तश्कील किस तरह करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल
जो कि एक हरावल दस्ते की हैसियत रखता है, एंटी नार्कोटिक्स फोर्स के ज़रिए उन तमाम लोगों का कला कमा करने के लिए तैयार है जो इस मकरू धंधे में शामिल है। हमारी नौजवान नस्ल से अपील है कि उन लोगों को ख़ास तौर पर वो लोग जो इस मकरू धंधे में शामिल है और इस मुल्क की जड़ों को दीमक की तरह चाट रहे हैं, उनके कला कमा करने के लिए भरपूर हमारा साथ दें। एक सेहतमंद माशरा ही हमारी कामयाबी की ज़मानत है। You are listening Educational FM 92.6. Stay tuned. The Department of Telecommunication Engineering. The Department of Telecommunication Engineering, Mehran University of Engineering and Technology, Jamshoro, was established in the year 2001. In fact, it was the first ever department in any public sector university of Pakistan. Since then, it enables students to develop and enhance understanding of both theoretical and applied knowledge of the fundamentals of telecommunication engineering and networking. The telecommunication department is aimed at training students for successful careers as qualified system designer, analysts, managers, academic professionals, and researchers. It inculcates professional ethical values and principles in the graduates to function electively as an individual and in a group to lead the society. The telecommunication department at Mehran University of Engineering and Technology, Jamshoro, produce graduates having in-depth discipline knowledge and the necessary skills, innovation, and creativity to formulate and solve problems through scientific methods. The graduates from telecommunication department are already serving in the reputable telecommunication organizations both in Pakistan and abroad. The department offers Bachelor of Engineering undergraduate program exclusively in telecommunication engineering. In addition, this department is also facilitating to conduct postgraduate programs up to the level of PhD. This is Mute FM 92.6, educational radio. Stay tuned. You are tuned into Mute FM 92.6, educational radio by Mehran University, Jamshoro. And all-time favorites. It's time for campus news on Mute FM 92.6. मेहरान यूनिवर्सिटी पारा सनती इदारन ऐं तदरीसी इदारन विच में मौजूद वित्तीय जे खात्मे लाइ सेमिनार। समय नवी ॿुधो पिया कैंपस न्यूज़ मां आहियां साकिब बबड़ो। मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जामशोरो पारा सनती इदारन ऐं तदरीसी इदारन विच में मौजूद वित्तीय जे खात्मे लाइ हिकु ॾींहं वारो सेमिनार थी गुज़रियो। सेमिनार खे ख़िताब कंदे मेहरान यूनिवर्सिटी जे वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर ताहा हुसैन अली चयो त इंजीनियरिंग जो मतिलबु ई सनत आहे। हुन चयो त असांजे इंजीनियर्स खे सनती ईजादुनि सां लाॻापियल तहक़ीक़ ऐं कमु करणो पवंदो। वाइस चांसलर चयो त यूनिवर्सिटीज़ जा उस्ताद तरक़ियुनि जे लाइ कागज़ी तहक़ीक़ में वधीक दिलचस्पी वठनि था, जॾहिं त नई ईजाद करणु ऐं इंजीनियरिंग जा औज़ार वग़ैरह ठाहिण जे हवाले सां असांजे इंजीनियर्स जो किरदारु ॻणाइण जहिड़ो न आहे। वाइस चांसलर चयो त असांजे इंजीनियर्स खे मुख़्तलिफ़ शोबनि जा उसलूकनि तरीक़नि सां नंढा नंढा औज़ार पाण ठाहिणा ऐं ईजाद करणा पवंदा। हुन चयो त असां वटि बायोमेडिकल ऐं मैकेनिकल इंजीनियरिंग जे शोबे खे सनअतुनि सां लाॻापियल तहक़ीक़ करणु खपे। इन मौक़े ते ॻाल्हाईंदे सामान शिफ़ा कंपनी जे डॉक्टर अरशद नूर चयो त असां मेडिकल जे शोबे सां लाॻापियल तक़रीबन 7 औज़ार पाण तयारु कया आहिनि जेके ॿाहिरियुनि मुल्कनि खे पिणु एक्सपोर्ट कया वञनि था। हुन चयो त असांजी कोशिशि आहे त असलूकनि तरीक़नि सां मेडिकल सां लाॻापियल वधीक सामान ऐं औज़ार पाकिस्तान में तयारु करियूं। हुन चयो त यूनिवर्सिटीज़ खे कागज़ी तहक़ीक़ खां वधीक ध्यानु ईजादुनि वारी तहक़ीक़ ते ॾियणो पवंदो। हुन चयो त तजुर्बनि लाइ बजेट घुर्जे ऐं सनअती इदारा ऐं कंपनीज़ इन हवाले सां यूनिवर्सिटीज़ जी मदद करे सघनि थियूं। इन मौक़े ते दुबई मां आयल स्मार्ट मेंटोर कंपनीअ जे चीफ एग्जीक्यूटिव वकास क़दीर सूमरो मेहरान यूनिवर्सिटी जे अलमनाए लाइ तैयार कयल स्मार्ट मेंटोर वेबसाइट पोर्टल बाबति प्रेज़ेंटेशन ॾिनी। वकास सूमरो ॿुधायो त हू हिन वक़्तु ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीअ समेत दुनिया जी मञियल यूनिवर्सिटीज़ लाइ स्मार्ट मेंटोर जो कमु करे रहियो आहे।
हुन चयो त जेके अलमनाय पैसा नथा ॾेई सघनि उहे शागिर्दनि लाइ वक़्तु कढी ऑनलाइन लेक्चर्स ॾेई सेशन वठी मेहरान यूनिवर्सिटी ऐं पंहिंजनि माण्हुनि जी ख़िदमत करे सघनि था। इन मौक़े ते मुख़्तलिफ़ फैकल्टीज़, डीन्स, सेमिनार जे रूह रवा प्रोफेसर डॉक्टर भवानी शंकर ऐं उस्तादनि शिरकत कई। ये कैंपस न्यूज़ अपडेट अवां लाइ मेहरान यूनिवर्सिटी जे पब्लिक रिलेशन ऑफिस जे सहकार सां नशर कई वई। वधीक तफ़सील ऐं असांजी नशियात बाबति ॼाणण लाइ facebook.com/mutefm ते असांखे ज्वाइन करियो ऐं ॿुधंदा रहो इल्म ऐं ॼाण जी खाण मेहरान FM 92.6 जामशोरो, the voice of my university. मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के अहदाफ में शामिल है कि अपने तलबा को अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट और डॉक्टरल लेवल पर जदीद तालीम के साथ जदीदियत के तकाज़ों से भी आरास्ता करे। इस सिलसिले में मेहरान यूनिवर्सिटी दर्सगाहों, सनतों और हुकूमत के साथ बाहमी रब्त पैदा करके तलबा के लिए नए मौक़े तलाश कर रही है। आप सुन रहे हैं मेहरान यूनिवर्सिटी कैंपस रेडियो FM 92.6, तकनीकी तालीम जदीद तनाजुर में। This is Mute FM 92.6. Campus FM radio by Mehran University, Jamshoro. आया शैनीला अली। आवाज़ जी लहरुनि वसीले जिते जिते मुंहिंजो आवाज़ पहुची रहियो आहे, अमां समूरनि सामईन खे मुंहिंजो खुलूस ऐं मुहबत भरियो सलाम। अॼुकल्ह हिन कॉम्पिटिशन जे दौर में अॻभरो थियण लाइ तालीम हासिल करणु लाज़िम आहे। हिन दौर में इल्म ताईं रसाई पिणु आसान थी चुकी आहे। बसि उन लाइ जुस्तजू ऐं दिलचस्पी हुजणु खपे। जेकर अव्हां वटि वसीला मौजूदु आहिनि त ज़रूरु ॿियनि सां वंडींदा रहो ऐं ॿुधंदा रहो इल्म ऐं ॼाण जी खाण मेहरान FM 92.6 जामशोरो। Mehran University of Engineering and Technology aims to equip students of undergraduate, postgraduate, and doctoral studies with advanced knowledge through collaborative opportunities emerged from linkages with academia, industry, and government. You are tuned to Mehran University Campus Radio FM 92.6. Excellence and innovation built into every broadcast. अस्सलाम वालेकुम सामाईन, तव्हां ॿुधी रहिया आहियो म्यूट FM 92.6 ऐं मां आहियां तव्हांजो पंहिंजो RJ जहांज़ेब बिरोई। सामाईन, म्यूट FM 92.6 तां नशर थींदड़ पंहिंजे प्रोग्राम स्टूडियो 92.6 विद RJ जहांज़ेब जे हिकु नए एपिसोड में तव्हांखे ख़ुश आमदीद कयां थो। वेलकम, भली कार। डियर लिसनर्स, जीअं तव्हांखे ख़बर आहे, स्टूडियो 92.6 विद RJ जहांज़ेब म्यूट FM 92.6 तां नशर थींदड़ उहो प्रोग्राम आहे जंहिंजे हर नए एपिसोड में असां अकेडमिक एजुकेशन, सेल्फ हेल्प, मोटिवेशन या कंहिं जनरल टॉपिक ते गुफ्तगू कंदा आहियूं। ऐं हर जेको एपिसोड जे नए टॉपिक ते गुफ्तगू करण जे लाइ असां सां गॾु मौजूदु हूंदा आहिनि को नओ गेस्ट, जंहिंसां यकीनन अव्हांजो बि इंटरेक्शन थींदो रहंदो आहे, छाकाणि त असां अव्हांजा मोकिलियल सवालात ऐं पैगाम बि पंहिंजे प्रोग्राम में शामिलु कंदा आहियूं। अव्हां जेको आहे प्रोग्राम में शामिलु थियण जे लाइ असांखे SMS करे था सघो। SMS करण जे लाइ टाइप कयो म्यूट FM MUTE स्पेस पंहिंजो नालो ऐं पैगाम ऐं सेंड कयो 4471 ते। साॻे ई वक़्तु जेकॾहिं अव्हां असांखे फेसबुक ते जॉइन करणु था चाहियो त हुते बि करे था सघो। फेसबुक ते जॉइन करण जे लाइ अव्हां लॉगिन कयो www.facebook.com/mute.fm ते, जिते जेको आहे अव्हां पंहिंजो फीडबैक, सजेशन्स जेको असांखे इनबॉक्स करे था सघो। ऐं हुते ई जेको अव्हांखे असांजा ॿिया